Put your hands up. Hello and good evening, everyone present here. As we all know, today is the Event Managers Day. So we are happy to wish you all a glorious and auspicious Event Managers Day to everyone present here. So let's start with most obvious question. Why do we celebrate Event Managers Day? So let me tell you, Event Managers Day is celebrated on 31st May as today is the birthday of Sir Arshad Hussain. He is the pioneer of event management industry in Rajasthan. He has been giving lectures and workshops on event management since the last 15 years. So today we are here to celebrate this day with the directors of NIEM Kolkata, Mr. Anil Lalwani, Mr. Kundan Lalwani. Also with us we have Mr. Yash Solanki, the founder of Smile Events. Apart from this, we have Firestone team with us. The Event Junction team would love to thank our guests to present today to celebrate this special day with us and our lovely audience. Now let's start with our first guest. We welcome a prodigious team with fire on their heart and rock solid determination. Fire, Firestone Events and Entertainments hail from the city of joy, Kolkata, leaving no stones unturned. They had done several private, public, and sports events in the past year. So, guys, put your hands together and welcome Mr. Aditya Bhattacharjee, production head cum funding member, and Mr. Rohit Jaiswal, marketing head cum funding member of the Firestone Events and Entertainment. Welcome, sir. So, sir, before starting the live section, we Event Junction team wishing Firestone Events and Entertainment a very happy birthday. Thank you. Thank you, sir, for coming here. You're Okay, most welcome. Happy Event Managers Day to you. thank you, sir. Same to you. सर तो आप लोगों ने ये इवेंट मैनेजर्स जो अपना फायरस्टोन टीम है या जो भी है वो आज आप लोगों ने आज का दिन बनाया है सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ कीपिंग दिस नेम फायरस्टोन सर रोहित जायसवाल आई वुड लाइक टू जी आस्क यू व्हाई हैव यू केप्ट दिस नेम फायरस्टोन एक्चुअली वी केम अप विद अ लॉट ऑफ नेम्स एंड हमने सोचा नहीं ठीक है फायर इज अ एलिमेंट रेयर एलिमेंट एंड लाइक प्यूरिटी एक तरीके से प्यूरिटी जस्टिफाई करता सो वी वेंट विद फायरस्टोन एंड लाइक ऑल ऑफ माय टीम मेंबर्स दे अग्रीड विद इट सो so गुड like you know यस सर and with conjunction to that we somehow found a song as well जो कि like you know there's a song by fire like called Firestone तो वो भी पता नहीं कहाँ से प्रोडिगली उस पे फिट यस बैठ गया सर हेलो आई थिंक योगिता का कुछ नेट इशू हो रहा है it's okay it's raining outside so fine. She had a really good question like Yeah, I still remember that 2 hours phone call with Opero, Shubhajit, and Devumita. That constant 2 hours phone call for the Namkaran. Yeah. I mean जो भी like you know if someone is having a company and if they try कि like you know we want a name for our company our brand and it's a very much chaotic process बहुत chaos लगता है उसमें and it took us a long time like दो दो तीन week लगा to like you know finally settle for a name and like in that process हमने बहुत सारे नाम इधर उधर किए I guess Yogita is back ओके hi Yogita Yeah. so हाय सर फॉर द we नेटवर्क were इशू sharing in your no, it's fine, it's fine. We were sharing in your absence. We are like it took us 2 to 3 weeks, and किसी के लिए भी chaotic होता है ना like to get come up with a name, a unique name, like you know यस जो सर catchy हो and उससे एक brand value मिले तो
like it was mostly कि पूरा team जो हमारा है, we decided on this one single name after like voting, like proper demographic democracy वाला feel लेके. So that's how Okay. we came up with the name. एंड सर वी आर रियली प्राउड ऑफ यू गाइस क्योंकि आप लोग एनआईएम से बिलोंग करते हैं और हम लोग खुद एनआईएम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने खुद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोला है। आप लोग सीरियसली हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं सर। तो सर, Thank you, thank you. हाउ डू यू फील टू बी द पार्ट एंड so I want to ask you both, how do you feel to be with the Event Junction team, to get involved with the Event Junction team? Aditro, I'd like to ask you this. एक्चुअली जब मेरे को फर्स्ट टाइम फोन किया था कि सुयश एंड देन नीतीश, तो दैट टाइम दे कॉल मी Hmm. एंड औरित्रो वी आर जस्ट थिंकिंग कि फायरस्टोन टीम के साथ हम लोग एक लाइव टॉक शो करेंगे। तो आई एम लिटिल बिट डाउट इन द टाइम कि भाई आर यू श्योर ना जे जे हम लोग जाएंगे लाइव में, तो तेरे को अगर कोई लगेगा कुछ बड़ा नाम, कुछ रिनाउंड इवेंट मैनेजर्स, तो या वी कैन प्रोवाइड देम, you can go for that. So then I don't know, because they say yeah, we'll go for Firestone. तो आई थिंक हाँ अच्छा तो एक लगा लगा था कि वी आर शेयरिंग द स्टेजेस विद आफ्टर दैट NIEM admins will come, then the genius Yash Solanki will come. So this is a Yes. proud for us, and obviously this is our first live talk show, and kind of collaboration with Event Junction, and it feels me great. Yeah, absolutely, we should go for this. And Rohit, what do you think, sir? Thank you, sir. Rohit, what do you think? I think like मुझे बहुत खुशी है कि like you know young energetic people are there, and बहुत diversification होता है Yes. कि like you know लोग नया नया start करते हैं and they go with like series of things कि हाँ हम इनको बुलाए हम उनको बुलाए, but they chose us and we are really like yeah, even हम भी like you know we are also like being considered, ये बहुत अच्छा लगता है अपने आप में सुनने में. So I'm really happy like you know, to be a part of this event right now. So like yeah. Yes, yes, sir. And Actually, whatever, ये young hands है हम लोग हैं जिसने पहली बार ये start किया है. and whatever Yes, they sir. are doing, just this talk show, and lots of companies they are also doing a minimum talk show. But whatever Event Junction is doing is just fantabulous, and I think they will carry this type of event forwards. All the best, Event Junction. Yes, Yes. yes, sir. We are really trying hard to make this event success. So it seems like 2021 is just a replica of 2020, same lockdown, no outdoor event. How you guys engage yourself in lockdown, Mr. Aditro? Actually, it is kind of exhausted time period for us, for the event managers, कि हम लोग 2020 में सोचा था कि ओके, जो कंडीशन चल रहा है इवेंट का, जो लॉकडाउन हो रहा है इवेंट का, इट विल ओवरकम इन 2021, but the same thing happened, the Hmm. same मतलब this is kind of duplicate, I think 2020 and Yes, 2021. sir. So now we are actually looking for some online shows. Actually, we already host some online shows in the previous year also in lockdown. I think those who are following us, we Hmm. done 2 3 for event on the online, that is All Bengal yoga competition, which is also going to Okay. held in 12th June to 21st of June. Yogistan Hmm. 2K21. That is also a All Bengal yoga competition, which is absolutely online. Okay. And Yes, sir. secondly, we are also thinking one more event, that is Avartan 1.0. We also done that event in the previous year in the 21st of June on occasion of World Music Day. Okay. So we are now trying to do some little bit more online events, and I think everybody, those who are opening event companies and those who are already in the market, everybody, I think they are thinking some online events, and I think जितना दिन lockdown चलेगा, an online event is the only one way. I don't think any. Yes, sir. और ऑनलाइन इवेंट एक्चुअल में हम सबको एक होता है ना मोटिवेट भी कर रहा है, और हम सब लोग जो इतना लेथार्जिक होके घर में बैठे हैं हम सबको टाइम दे रहा है कुछ करने के लिए, सो इट्स गिविंग अस न्यू अपॉर्चुनिटीज. So, Absolutely. so with this, we got some questions from our audience.
So let's move forward to our audience question. Okay, Aditya, first question for you. In your point of view, how you measured that your event was held successful? This is kind of a Do you want complicated. me to repeat the question? No, no, absolutely. Okay. दिस इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यू नो। Okay. जैसे कि अगर किसी को कोई पूछेगा कि पानी पूरी सूखा पसंद करते हो या पानी के साथ, तो मे बी समवन से कि हाँ पानी पूरी मेरे को सूखा पसंद है, किसी को पानी के साथ पसंद है। तो इन माई देखो अब अभी इवेंट मैनेजर बहुत है, तो उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत होगा। कोई बोलेगा कि हाँ मेरा इवेंट हो गया, मेरा पूरा अमाउंट मिल गया, एंड ओके आई एम डन, आई हैव टू लीव द आई हैव टू लीव द इवेंट, आई विल थिंक फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। बट इन Hmm. माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कैसे डिटरमाइन करोगे एक इवेंट को दैट इज सक्सेसफुल और नॉट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द कस्टमर फीडबैक। तुम जितना भी इवेंट करो, जितना भी इवेंट बुरे करो कि अच्छा करो, अगर तुम्हारा फीडबैक जब आएगा और तुम वो फीडबैक को अगर तुम उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करोगे कि मेरा क्या क्या गलती हुआ था, फ्यूचर में क्या क्या गलती नहीं होगा, एंड क्या क्या Hmm. अच्छा हुआ था, किसको मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो पूरा जो चीज वो कस्टमर फीडबैक के ऊपर डिपेंड है। तो आई थिंक मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर फीडबैक। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत इवेंट Okay. कंपनी है जो लोग एक बार काम करता है, पैसा लेकर निकल जाता है। इसमें कुछ बुरा बात है नहीं, क्योंकि दे आर थिंकिंग कि वी विल डील विद द कस्टमर। बट Okay. आई फ्रैंकली स्पीकिंग कि फायरस्टोन इवेंट्स ऑलवेज थिंकिंग कि कोई कस्टमर को कैसे क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आई एम गिविंग एन एग्जांपल, in the in this year, in the month of April, we done a birthday in Hmm. South Kolkata. I think there are some pictures in our pages also. So we make minimum amount of profit, obviously. So in that, after that, Hmm. customer gave us a tremendous feedback कि हाँ Firestone Events, you have done a great job, and from that we already get another marriage which will be held on November अगर लॉकडाउन नहीं है, and Okay. another anniversary which will be held in the December अगर लॉकडाउन नहीं है तो, मतलब that is Hmm. on. So I think the customer feedback, the customer relationship is main important कि इवेंट के बाद तुम मुझसे जाके पूछो कि मेरा इवेंट कैसा हुआ सर, मेरा क्या क्या गलती हुआ था, and this is the main customer feedback. Okay. Uh, थैंक यू सो मच। एंड रोहित, आप एक मार्केटिंग हेड हो, तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई बजट में ऐसा कोई इश्यू आता है तो हाउ डू यू डील विद इट, लाइक लास्ट मोमेंट आप आउट ऑफ बजट जा रहे हो, सो हाउ डू यू डील विद आउट ऑफ बजट थिंग? आउट ऑफ बजट, सी प्रैक्टिकली हमारा काम ही है कि लाइक बजट में ही डील करना, लाइक गेटिंग थिंग्स डन इन अ हाँ। लाइक सर्टेन लिमिटेड बजट। तो लाइक दिस इज वेरी लाइक ये बहुत ट्रायल एंड एरर सिचुएशन होता है। जब मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही बता पाऊंगा कि लाइक कभी कभार हमें लाइक किसी थर्ड पार्टी से काम करवाना पड़ता है या आउटसोर्स करना पड़ता है। तो उस टाइम में हमें लगता है कि अगर ये काम हम खुद से कर ले या समाउ इसको मैनेज करें विदाउट ड्रॉपिंग द क्वालिटी, या ठीक है हम यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें लाइक बाय अ डेडलाइन चीज होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपको कितना टाइम है, कितना रिसोर्सेज है, और आपके पास जो रिसोर्सेज आप उसको कैसे एलोकेट करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इवेंट पे किसी भी टाइप का बजट, चाहे वो लाइक बैक मतलब बैक ऑफ द स्टेज काम हो या ऑन द स्टेज वाला काम हो, आपको उसको कैसे करना है प्री प्लानिंग में, फिर ये सब चीजें टोटली डिपेंड करती है कि आप कितना बेटर अपने रिसोर्सेज को जानते हो। तो बस ऐसे ही इवेंट का फिर बाकी तो आपको कंटिजेंसी लेके ही चलना चाहिए हमेशा। तो मुझे लगता है कि ये हर एक को सीखने के लिए बेसिकली समझना पड़ेगा कि मेरे रिसोर्सेज कैसे है, मेरे वेंडर्स कैसे हैं, मैं ये स्किल्स है कि नहीं, कि मैं ये मार्केटिंग वाला काम या ऑनलाइन वाला काम, बहुत बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करके फोटोग्राफी से लेके बहुत कुछ चीजें आपको जाननी पड़ती है। तो जितना आपका नॉलेज रहेगा उतना आप बजट को थोड़ा आप एलोकेट कर पाएंगे उस हिसाब से। तो बस ये सिंपल सा तो लगता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है।
Okay. So I just sir, one minute. I just add some practical example. I just remember now. okay. हम लोग का एनआईएम का जो एक इवेंट हुआ था रंग दे गुलाल बोलकर जो होली का इवेंट था. So Yes, that I know. that time एक इशू हुआ था कि बैकड्रॉप मतलब स्टेज का जो बैकड्रॉप था तो बैकड्रॉप का जो जो फ्लेक्स था तो फ्लेक्स थोड़ा ज्यादा हो गया था. तो that time Obro and then Rahul Gupta from Ahvan batch आवान बैच. they tried Mm-hmm. some substitute way. This substitute way is main important thing कि तुम्हारा बजट इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो दैट टाइम अगर हम लोग अच्छा. को बैकड्रॉप लगाने के लिए हम लोग कोई बटन लेता तो उसका वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो जाता. मे बी द इवेंट विल बी द आउट ऑफ द बजट. But that time they No. use the brains, their experience, and they use some bamboos, and they attached it with the backstage, and after that they finished it. The backdrop is almost done before starting the event. So you have to know the substitute कि इस अगर मेरे को चा लगेगा तो चा के बिना हम लोग क्या दे सकते हैं. अगर चा पत्ता नहीं है तो वी कैन गो फॉर टी बैग्स. पर थोड़ा मतलब बजट का अच्छा तो होगा ही ना. Okay. तो वी नीड टू डू सम सब्स्टिट्यूट कि Mm-hmm. इसके मतलब ये नहीं है तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है. तो सब्स्टिट्यूट मटेरियल के ऊपर भी तुम्हारा बजट अगर आउट ऑफ बजट हो गया इवेंट तो वो थोड़ा Mm-hmm. डिपेंड. Exactly. Okay, so one of our viewer wants to know how is a vendor management important in event industry? So Ronit, would you like to answer? वेंडर मैनेजमेंट ये बहुत ही लाइक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इवेंट का कि लाइक आपके जो वेंडर्स है Mm. क्योंकि बेसिकली वेंडर्स हो गए आपके आपके बैकबोन. आप उनके बिना इवेंट Mm-hmm. को खड़ा नहीं कर सकते. Yes, तो sir. जैसे भी आपके वेंडर्स होते हैं उनको मैनेज करने का एक सिंपल प्रोसेस है कि एक गुडविल आपको मेंटेन करना चाहिए. ठीक है उनके साथ लेकिन बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है. कॉमन सेंस लगता है कि आप Mm-hmm. आपके जो भी वेंडर्स है और आपको एक मार्केट का डेफिनेटली एक मार्केट का आइडिया होना चाहिए. मेरे हमारे टीम में मैक्सिमम वेंडर का जो भी रहता है ना वो ऑरिथ्रो और ऑब्रोनिल देखते हैं. जो ऑब्रोनिल अभी फिलहाल आज यहाँ पे तो आ नहीं पाया तो वो ऑरिथ्रो देखता है. तो ऑरिथ्रो और ज्यादा बेटर ना डिटेल में बता पाएगा कि लाइक वेंडर को कैसे वो पकड़ के रखता है. सी बेसिकली ऑरिथ्रो मेरे वी नीड. भाई. See, basically we need to know the market very well. हम जहाँ काम करेंगे, suppose I am doing a event in Park Street area. Suppose I am doing a Okay. event in NIEM building. Okay, Mm-hmm. Russell Street. So we need to a basic idea कि वहाँ पर नजदीक क्या क्या इवेंट क्या क्या वेंडर है, उन लोगों का रेट क्या है. तो अगर हम लोग को ये पता चलेगा कि सपोज XYZ टेंट हाउस इसका रेट है पर एलईडी स्क्रीन का 250 पर स्क्वायर Mm-hmm. फीट. तो हम लोग दूसरा कुछ दुकान में गया वहां पर Mm-hmm. देखा कि वही एलईडी स्क्रीन और कोई इवन टेंट हाउस और कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स दे आर गिविंग 180 पर स्क्वायर फीट. सो वी नीड टू सर्वे द Mm-hmm. मार्केट वेरी वेल. आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर कि हाँ Okay. हम वेंडर ठीक है कि वी कैन गो फॉर दिस वेंडर वी कैन गो फॉर दैट वेंडर. Mm. Okay. So आप दोनों ने साथ में कंपनी स्टार्ट किया था. So how much money do you require to start an own company, like an event company? So कौन अरित्रो रोनित कोई तो है. अरित्रो you reply. बस तो ये क्या मतलब ये क्या व्यूअरशिप से क्वेश्चन है या ये सब ये सब कोई हमारे बजट व्यूअर्स ने कोई बजट आंसर जान क्वेश्चन किए. कोई बजट जानना चाहता भाई. सारे हमारे. हाँ, क्योंकि सबको तो अपना अपना कंपनी स्टार्ट करना है तो सबके पास मतलब बजट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंपनी स्टार्ट करने के लिए. So everyone wants to know. देखो इवेंट कंपनी खोलने के लिए कुछ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इवेंट तुमको ये बजट लेकर ही फील्ड में आना पड़ेगा. जब मैंने हम्म. 2016 में मेरा खुद का कंपनी है वो मैंने ओपन किया था तो मेरे पास कैपिटल जीरो था. तो मैंने ओके. ये सोचकर स्टार्ट किया था कि हाँ पहले आई हैव टू टॉक विद सम क्लाइंट विद सम कस्टमर्स की जिनका हम्म. नजदीक कुछ शादी कुछ सेरेमनी कुछ हाउस वार्मिंग सेरेमनी है. वहां पर हम थोड़ा काम कर लेंगे वहां से जितना पैसा आएगा प्रॉफिट आएगा तो आई कैन रीयूज दैट इन माय बिजनेस. सो
basically there is not such hard and fast rules ki I have to take 1 lakh rupees 2 lakhs rupees to start my business. It's up to you. और इवेंट कंपनी ओपन करने के लिए तो सच्ची में ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, मगर हाँ थोड़ा लाइसेंस का जो कॉस्टिंग होता है, देन इफ यू गो फॉर कैटरिंग सेक्शन देन यू हैव टू टेक द लाइसेंस ऑफ FSSAI, दैट द फूड लाइसेंस। तो इन ये जो लाइसेंस है ये लाइसेंस का थोड़ा तो कॉस्टिंग आता है। तो अप्रोक्सीमेटली इफ यू टेल मी इन अमाउंट आई विल टेक 50 to 60K, इट विल बी ऑल ओके इनिशियली Oh, ओपन करने के लिए। अगर खुद का मटेरियल बाई करने के लिए तो देन दिस इज अ डिफरेंट इश्यूज। okay. So viewers, please DM us a question in the Instagram ताकि हम लोग अरित्रो और रोनी से और क्वेश्चन पूछ सके। तब तक एक और क्वेश्चन है, where do you get unique ideas when clients ask you something new? अरित्रो भट्टाचार्य जी, आपके लिए ये। अरे मेरे को ही पकड़ लिया रे। बताइए। हाँ नहीं, देखो इसमें इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होता है। मैंने कल जो ड्राई रन हुआ था तो हम्म उससे मैंने एक दो बार ये मेंशन किया था। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, मगर हम्म मेरा फायरस्टोन का ही जो फाउंडर मेंबर है अब्रोनील दत्तो, वंस ही सेड हम्म इम्पोर्टेंट लाइन कि भाई तुम जितना भी आइडिया जनरेट कर लो इवेंट के लिए, जितना भी हम्म ब्रेनस्टॉर्मिंग एपिसोड जितना कर लो, तुम्हारा बेसिक जो आइडिया वो तुम्हारा हम्म ओपोनेंट से आएगा। ठीक है, कि ओपोनेंट क्या क्या कर रहे हैं। सपोज तुम लोग आज एक लाइव शो होस्ट कर रहे हो, हाँ हाँ सो कि तुम्हारा ओपोनेंट और कोई कंपनी वो भी एक लाइव शो होस्ट कर रहे हैं। दे आर टेकिंग हम्म मच मोर आर्टिस्ट, दे आर टेकिंग मच मोर व्यूअर्स। सो फ्रॉम दैट हम्म यू कैन थिंक कि अच्छा ये लोग ये आर्टिस्ट को ले रहा है, दे आर लुकिंग फॉर दिस जियोग्राफिक एरिया डेमोग्राफिक एरिया की इन लोगों को दे आर टारगेटिंग। सो हम्म ओपोनेंट तो एक चीज है, तो इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग बोलते हैं KYC, दैट इज नॉट नो योर कस्टमर, दैट इज नो योर कॉम्पिटिटर्स। ओके, competition. ओके कॉम्पिटिटर्स को देखो, उससे सीखो। एंड द सेकेंड थिंग इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेट करो, जितना हो सके खुद का आइडिया ले लो एंड देन गो फॉर द रियल फील्ड। Okay. Okay, so what is your view on post-COVID event industry? Like event industry बहुत ज्यादा harm हुआ है इससे. So ये हम लोग का viewer का main question है. What is your view on post-COVID event industry? रोनित, अरित्र अ, बहुत थक गया है, हम देखिए लोग का आंसर करते करते रोनित को पूछते अब हैं। कौन है, मेरे को पहले ये जानना कौन है जो औरतों से इतना क्वेश्चन कर रहा। हाँ, तो हमारे कमिंग टू द व्यूअर्स बहुत क्वेश्चन, सारे ऑडियंस है। भाई मेरा फैन है। फैन आप फॉलोइंग है एनआईएम के पता है बहुत मुझे। स्टार हो ना, तो इसीलिए एनआईएम के स्टार। पैंडेमिक जब लास्ट ईयर हिट हुआ था तो एवरीवन वाज लाइक, सब कोई ऑनलाइन स्विच हो रहा था। स्टार्टिंग में इसको एक्सेप्टेबल बनाना बहुत डिफिकल्ट था। एवरीवन हैड अ स्मार्टफोन, लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन, लाइक द हम्म मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैड अ स्मार्टफोन। इंटरनेट को इजी एक्सेस है ऑल थ्रू आउट। लाइक हम्म एक अर्बन जो पॉपुलेशन है हमारा, जो कि इवेंट में भी बेसिकली एक्टिवली एंगेज होता है। और तो ये जब स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, तो हम जब स्टार्ट कर रहे थे फायरस्टोन के लिए कि हम भी ऑनलाइन इवेंट्स सोचेंगे, उस टाइम पे हम भी श्योर नहीं थे, बिकॉज हमने ज्यादातर ऑफलाइन इवेंट्स देखा था जो बेसिकली फिजिकल में लाइक एग्जीक्यूट होता है। तो उस टाइम पे हम्म हमें लगा कि ऑनलाइन क्या कर सकते हैं हम लोग वैसा कुछ कि लाइक कि एक इम्पैक्ट पड़े, कुछ आइडिया जनरेट हुए, लेकिन प्लेटफॉर्म हमारा ऑनलाइन ही रहा। बाद में ऑफलाइन हुआ, फिर वापस हम लोग आज देखिए ऑनलाइन में है, आप भी है, हम लोग भी है। तो आई गेस ना कि ये इंटरनेट और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका मर्ज जो होगा आगे जाके, ये पोस्ट कोविड हम्म में एक बहुत लाइक एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि इसके पहले ऑफलाइन इवेंट्स में लाइक ऑनलाइन वाले एलिमेंट ज्यादा नहीं आते थे। मैक्सिमम आपका इनविटेशंस एंड ऑल, उसके अलावा आई गेस ऑडियो विजुअल में उतना भी नहीं लगता है कि कुछ ऑनलाइन मटेरियल हो। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो, जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो हम्म एलिमेंट्स है उसको इवेंट में हम्म इनकॉर्पोरेट किया जाए। एंड इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑनलाइन के लिए भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बैठी है जो ऑनलाइन चीजों को हैंडल हम्म करती है।
उसका बैकग्राउंड देखती है, चेक करती है सब कुछ। तो ये मर्ज होगा तो फायदा इकोनॉमी को ही होगा ना इससे, कि लाइक इतने लोगों को एक ओके, साथ बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा तो सर आपका मतलब ये है कि बहुत स्कोप है वर्चुअल इवेंट्स का, लाइक है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कोप है, हम लोग कर सकते हैं वर्चुअल इवेंट्स भी। थैंक यू डेफिनेटली सो ब्रो। मच सर। देखो अभी फ्यूचर में क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हर साल ही कोविड आएगा, 2-3 महीना तो हाँ। लॉकडाउन होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आगे होता है ना कि पर ईयर मलेरिया, पर ईयर डेंगू, तो ऐसे ही लग रहा है कि हम्म। फ्यूचर फ्यूचर ईयर में पर ईयर कोविड, पर ईयर ब्लैक फंगस, ऐसा कुछ आ रहा है पर ईयर। तो फॉर दैट कि 2-3 महीना लॉकडाउन होगा, तो आई थिंक वी हम्म। हैव concentrate over the virtual events। अभी तो देख रहा है कि वर्चुअल इवेंट्स में बाहर में वेडिंग भी हो रहा है, तो अभी कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो रहा है। एंड हाँ, एक तो इशू है कि वर्चुअल इवेंट में जो इकोनॉमिकल जो रेवेन्यू ये थोड़ा तो डाउन होगा ही कंट्री का, बट वे आउट तो कुछ है नहीं। जब मतलब जितना दिन ना ये कोविड का जो रेस ये रहेगा, मगर वी हम्म। हैव द वर्चुअल इवेंट्स नाउ, दिस इज ओके, ओनली द सो ओके सर, तो आप लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स किए, सो यू वांट टू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस, लाइक कोई फनी एक्सपीरियंस जहाँ आपके साथ ऐसा हुआ हो कुछ इवेंट्स के दौरान। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं और औरित्रो साथ में कुछ इवेंट्स किए थे स्टार्टिंग, लाइक व्हेन वी जॉइंड एनआईएम। तो बेसिकली इट वाज हम्म। लाइक हम लोग ग्रुप्स में जाते थे। एंड इवेंट की एक चीज होती है कि आपको बोला जाएगा कि आपको 5 या 6 बजे आना है, जबकि इवेंट आपका स्टार्ट होगा 10 बजे से। एंड वी कुड हैव मेड इट लाइक हम ठीक है 8 बजे भी आ सकते हैं, बट ये होता था कि हम 5 बजे 4 बजे लाइक, जो कि लाइक कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में रहते, कोलकाता में इवेंट होता था, उनको जाने में जो हालत होती थी हमारी, लाइक ठंडी के टाइम में फॉग हम्म। में कैसे कैसे। एंड रास्ते में पता नहीं कैसे बहुत लोग मिल जाते थे, अपने ही एनआईएम के बंदे मिल जाते थे। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता था हमेशा वहां पहुंचते पहुंचते। एंड इवेंट के दौरान भी लाइक बहुत कुछ लाइक ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ। तो ये एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से इवेंट में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि काम के टाइम में फोकस वहीं पर रहता है, जो होता है काम खत्म होने के बाद होता है, जब ग्रुप में रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। हाँ, तो ऐसे है। तो तो काम करने के बाद तो बहुत पार्टी किया है आप लोगों ने, साथ में बहुत एंजॉय किया है काम करने के बाद तो। बेसिकली हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है आफ्टर पार्टी से। बाप रे, सही है, हम लोग भी चाहते हैं हम लोग को भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो, हम लोग भी बहुत सारे आफ्टर पार्टीज करें साथ में। सो सर आप लोग को कितना इयर्स हो गया इवन लाइन में, लाइक दोनों को, लाइक अरित्रो? मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस तो औरतों का। अरित्रो एक्चुअली आई कितना टाइम एम हुआ आपको? एक्चुअली मतलब मैं इवेंट कर रही हूँ 2008 से, when I am in class 8, okay, and effectively I am doing the event in 2000, मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ हम काम कर हम्म। रहे हैं इन द ईयर 2011 and 12 से। And after that 2016 I make my own startup, and then 2019 in NIEM. So approximately 10 years, above 10 years. ओके, और रोनित आपको कितना टाइम हो गया? बाप रे बाप, मैन सीरियसली। मैं अब जब से एनआईएम ज्वाइन किया तब से ही इवेंट में स्टार्ट किया। इसके पहले तो आई यूज्ड टू बी अ फ्रीलांसर। तो लाइक इवेंट का दिल बहुत था, फ्रीलांसर? लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज। यस, आई वाज अ फ्रीलांसर फॉर लास्ट आपने 4 years। किस में, इवेंट मैनेजमेंट में फ्रीलांसिंग? नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैं बहुत जॉब रोल्स कर चुका हूँ इसके पहले, लाइक शॉर्ट फिल्म्स करता था, डॉक्यूमेंट्रीज करता था, मार्केटिंग इंटर्नशिप्स करता था। एंड छोटे मोटे चीज रोल्स प्ले करते रहता था, बट इट वाज नेवर कि लाइक मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। बट इवेंट्स ज्वाइन करने के बाद, लाइक बेसिकली एनआईएम ज्वाइन करने के बाद, तो अब सिंपली इसी डायरेक्शन में है दिमाग, फोकस यहीं पर है। लाइक ऑलमोस्ट ओके, अभी अरे सो आप अगर अरे हाँ, आप अभी अगर दोनों को 2020 को नहीं बहुत गिनेंगे, सॉरी। 2020 को अगर आप गिनते हो या दोनों नहीं गिनते हो नहीं ही पता, इवेंट तो हुआ है। तो अच्छा इवेंट ठीक हुआ है, ना, वर्चुअल इवेंट किया हम लोगों ने। तो 3 साल हो गए करीब करीब। हाँ, हाँ 3 साल हो गए। सो आप दोनों एनआईएम से हो, तो एनआईएम में आप स्टूडेंट्स थे, तो एज ए स्टूडेंट ऐसा कुछ है एनआईएम में आप लोगों का फनी एक्सपीरियंस कुछ टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ, आप लोग बोल सकते हो कोई बात नहीं।
एडमिन टीम बैकस्टेज में नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोल सकते हो, कोई नहीं है, बिना डरे बोल सकते हो। अरित्र बताने वाले हैं कुछ, अरित्र के साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा लगता है। गो हरित्रो गो। बताइए, एक्चुअली फैकल्टी ने क्या किया है? बहुत अच्छे फैकल्टी तो बहुत अच्छे हैं, एंड डायरेक्टर्स आर टू गुड। मैंने तो अभी आज भी बात कर रहा था राघव से, तो दे आर टू गुड, बट एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत अच्छा बहुत बुरा बहुत कुछ है। एक एक्सपीरियंस है कि मेरे को एक मतलब हाँ, सरस्वती पूजा के टाइम, उसके आगे, हाँ पूजा के टाइम ही जो हम लोग का जो टीम मेंबर देवोमिता रहा, हम लोग का बैच में ही था, तो ही सेड कि भाई ये सरस्वती इस बार का जो पूजा ये हम लोग के ऊपर है, तो व्हाट आर यू थिंकिंग? तो मैंने बोला कि हाँ हम लोग कर लेंगे, कोई इशू है नहीं। तो हम लोग के साथ उस टाइम आईसी बैच का थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ था वंशिका कृपा, 2019 आई थिंक, हाँ 2019। तो इवेंट का जो एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि सरस्वती पूजा का अगले दिन, मतलब ऑन डे बिफोर हम लोग डेकोरेशन कर रहा था, तो उस दिन थोड़ा बंदा कम था, मतलब थोड़ा कम था, तो इसलिए मैं और अभ्रू सोचा था कि कोई वे आउट है कि ये जो डेकोरेशन, इस डेकोरेशन को कवर अप करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे इवेंट है। तो we talked up with Anil sir and Kundan sir. तो they said कि तुम लोग करो जितना हो सके within 7 p.m. So we tried our best within 7 p.m. to do the whole decoration. But the thing is that we need to stay in the NIM on that night actually. And whole night मैं और अभ्रू ने डेकोरेशन किया, and the most unlucky thing is that कि जो टेरेस थे NIM का, तो वो टेरेस डेकोरेशन में हम लोग 3 घंटे स्पेंड कर दिया। तो 3 घंटे के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग जब डोर क्लोज किया तब बारिश आ गया, ठीक है। सो टोटल 3 आवर्स का जो हम लोग जो मेहनत किया उस टाइम, पूरा सब पानी पानी में, में। पूरा का पूरा। और ये सिर्फ सरस्वती पूजा की बात नहीं है, इवन हमारा हाँ ब्लॉगनेस इवेंट जो हो रहा था, हमने 4 घंटे की मेहनत से, लाइक कुंदन है हमारे टीम में, तो मैं, कुंदन और शुभजीत जो है, हम लोग बाहर छत पे, रूफ पे वो डैंगलर्स एंड ऑल हमारे प्रमोटर्स और स्पॉन्सर्स के लगवा रहे थे। और उस टाइम पे भी 4 घंटे की मेहनत के बाद जब सक्सेसफुली डैंगलर्स लटक गया, उसके बाद फिर बारिश आ गया एंड बहुत सारा प्रमोशनल मटेरियल इधर उधर धुल गया। ये एक क्राइसिस सिचुएशन होती है, तो उस टाइम में लाइक सपोर्ट बहुत मिला टीम से। तो ये भी एक एनआईएम का एक्सपीरियंस है कि एनआईएम ही हमारा वेन्यू था उस टाइम पे, और उस टाइम पे एनआईएम के एडमिन टीम से जो सपोर्ट हमें मिला वो लाइक इनक्रेडिबल था। एक्चुअल में एनआईएम के एडमिन टीम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और मेन चीज एक्चुअली सबको को ये होगा कि हम लोग सब ना स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आप दोनों भी स्ट्रगल किए कम्युनिकेशन में? मैंने तो 2019 से 2021 तक 2 क्लास किया है कम्युनिकेशन का। क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, 2 क्लास बस किए? जैसा तू कितना क्लास किया भाई? रॉलिस कितना क्लास किया आपने? उन्होंने सिर्फ 2 ही क्लास किए। मुझे याद नहीं है, मुझे बस घर, मतलब क्लास में बैठना अच्छा लगता था क्योंकि एसी चलती है, तो हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ क्लासेस की ऑब्वियसली कोई ज्यादा छोड़ी नहीं है, तो तो कम्युनिकेशन नहीं, दिक्कत खास नहीं हुआ, बस सीखने बहुत ज्यादा मिला। दिक्कत वैसा कुछ था नहीं कि लाइक कि कुछ नया सीख रहे हैं, और कुछ, हाँ बस कुछ इंटीग्रेट होता रहता था, तो नया अपडेट मिलता रहता था। रॉलिस आपको क्या प्रॉब्लम था क्या? आदित्य को कुछ प्रॉब्लम है लगता है कम्युनिकेशन, सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड किया आपने, क्यों? आप बहुत अच्छे हो। एक्चुअली क्या है ना, मतलब मेरा जो फैन फॉलोइंग इतना था मेरा वाव बैच से, तो मैं जब घर में बैठा बैठा होता था तो लाइव में मेरा क्लास मेरा फोन में आ जाता था। तो मैंने सोच लिया क्यों दिक्कत लेके एनआईएम जाओ, तो फोन में ही कर लेते हैं क्लास। वाह, तो हम अटेंडेंस वर्चुअल वगैरह आपको इवेंट्स नहीं कितने साल करना, पहले मतलब से घर कर रहे में हैं। बैठा रहो। वही तो, मतलब क्लासेस ही वर्चुअली चल रहे थे, इवेंट्स भी नहीं, क्लासेस ही वर्चुअली चल रहा था। पहले तो हम लोग बहुत मजा करता था ऐसे, मगर हाँ हम लोग 2-3 तो क्लास किए थे कम्युनिकेशन का, ये तो सही है। मगर लास्ट टाइम है, और एक बात कि उस टाइम हम लोग का बहुत इवेंट भी होता था, तो
इसलिए 3-4 महीने पूरा तो क्लास ऑफ भी होता था, देन लॉकडाउन। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली तो हाँ, हम लोग 3-4 क्लास तो किए थे। ओके, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया हम लोग को। सो आई लाइक टू थैंक यू ऑल, यू बोथ फॉर योर वैल्यूएबल प्रेजेंस ऑन दिस लाइव सेशन। सो प्लीज आप लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे न्यू इवेंट मैनेजर्स को, लाइक? ओके, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं NIM का और बाहर का, तो गाइस अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट ये थोड़ा एग्जॉस्टिव टाइम है इवेंट इंडस्ट्री के लिए। बट द थिंग इज कि एक जब लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ही असली इवेंट स्टार्ट होगा। कि ऐसा होता है ना कि जब कुछ स्टॉक क्लियरेंस होता है कोई शॉपिंग मॉल में, कि हाँ बहुत दिन बंद हुआ था शॉपिंग मॉल, उसके बाद स्टॉक क्लियरेंस हो रहा है। तो ऐसे भी इवेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा होगा, जितना भी वेडिंग, जितना भी पब्लिक इवेंट, जितना भी इवेंट अभी स्टॉप हुआ है, तो आई थिंक लॉकडाउन के बाद ये सब पूरा इवेंट होगा। सो गाइस डोंट बी सो सैड, इवेंट होगा। एंड हाँ, अभी थोड़ा टफ टाइम मतलब चल रहा है, मगर कुछ इशू है नहीं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इवेंट फिर से फ्लो में आएगा, नॉट एन इशू। Okay. So what are the worst and the best experience in event? Like बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो कोई ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस या वर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोग का रहा है जहाँ तुमने एकदम भी इवेंट में एंजॉय नहीं किया, लाइक एकदम नहीं अच्छे लोग थे? रहा है रहा। नहीं, मैं तो एक बताइए, ही चीज दूंगा कि रोहित बता। हाँ, बताइए। हमारा बेसिकली जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमने हॉस्पिटैलिटी बहुत किया है, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा किया, हमारा सीवी भर गया होगा हॉस्पिटैलिटी से। एंड स्टार्टिंग में वी यूज टू एंजॉय, क्योंकि हमें लगता था कि चलो इसमें कुछ डिफरेंट रोल्स रहेंगे जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, बट ओवर द टाइम ये कुछ ज्यादा ही मोनोटोनस हो गया। एंड पीपल वेर लाइक, तुम हॉस्पिटैलिटी करते हो, तुम तो ये भी कर सकते हो हॉस्पिटैलिटी, तो लाइक हमें हॉस्पिटैलिटी वालों की तरफ से लाइक पहचाने जाने लगा था। तो हम हाँ। उसके बाहर आना चाहते थे कि लाइक हॉस्पिटैलिटी नहीं ब्रो, हम लोग और भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक चीज था कि हमें हॉस्पिटैलिटी कुछ ज्यादा ही लाइक स्कोप में मिल गया था, जबकि हमें और भी बहुत एक्सप्लोर करना था। और इतना आपका कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस? मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत है, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब NIM का थ्रू से सही में NIM जितना भी इवेंट दिया, बहुत सही इवेंट दिया। मैं तो अभी बोलता हूँ कि हम लोग का बैच, वाओ, आई सी। आफ्टर दैट मतलब लॉकडाउन का पीरियड टाइम में जो जो इवेंट हुआ था, बहुत सही इवेंट हुआ था। लॉकडाउन के बाद तो थोड़ा इशू है बाहर का, जो हाँ जी। जो प्रॉब्लम, जो इशू है। तो मेरा एक अभी याद आया, मेरे साथ रोनित भी था। हम लोग सनबर्न कर रहा था उस टाइम, अक्टूबर का 12/11/12/13 आई थिंक 2019 का। तो मेरा, हम्म। रोनित और 2-3 बंदा था, उन लोग का मतलब प्रोडक्शन था, पूरा जो प्रोडक्शन वो देखने का काम था। तो हाँ जी। हम लोग गया, तो पूजा के टाइम एक्चुअली बहुत बारिश हुआ था, तो फील तो मतलब छोड़ दो उसका बात। तो हम लोग गया, तो बारिश यार बहुत फील्ड में। तो हम लोग सोचो इसमें प्रोडक्शन कैसे होगा। तो उसके बाद जो इवेंट कंपनी था वो लोग आया, देन दे से कि देखो, प्रोडक्शन में तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता नहीं है कि तुम घर बैठ के प्रोडक्शन का काम करोगे, मतलब ऐसा कुछ कॉम्फर्ट सिचुएशन नहीं होगा। तो यू हैव टू डू दिस इन दिस चीज, इन दिस टीम। तो मैं, रोनित, हम दोनों ही मतलब पैंट को पूरा नी तक फोल्ड करके 2 दिन तक पूरा बारिश में वो प्रोडक्शन किया था सनबर्न का। तो हम लोग 11 एंड 12 थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि सुबह 8 से 9 8 to 9 AM अप्रोक्सीमेटली, एंड देन मिड आई थिंक मिडनाइट 12 to 1 AM तक हम लोग पूरा किचन में था, पूरा फील्ड में था। तो आफ्टर दैट व्हेन द सनबर्न, जब वो साउंड चेक स्टार्ट हुआ, 1 2 3 साउंड चेक स्टार्ट हुआ, देन द लाइट, देन द डीजे। आई थिंक उस टाइम येलो क्लॉ बोलकर एक बैंड था, सनबर्न आया था, सनबर्न 2029 में। हम्म। दे जस्ट नेल्ड इट। एंड हाँ, जो इधर जो 2 दिन का जो एग्जॉस्टेड ये था, तो वो एक दिन में पूरा हटा गया, मतलब इट्स ऑलरेडी रिमूव जस्ट।
So that is the Okay. good and bad thing in an event. So I think this is the. Okay. तो आप लोग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है और आई होप कि आप लोग ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स करें और हम लोग भी बहुत सारे इवेंट्स करें. थैंक यू सो मच गाइस टू बी प्रेजेंट हियर विद अस इन द लाइव सेशन. Thank Like you guys. all the best, guys, and thank you. Please और do आप कोई follow. मैसेज देना चाहोगे? Uh, हाँ जाइए फॉलो कीजिए फायरस्टोन इवेंट एंड एंटरटेनमेंट को और साथ में इवेंट जंक्शन को भी फॉलो कीजिए. जरूर जरूर Obvious. जरूर. Okay, thank you. थैंक Thank यू you सो so much. मच. Thank you. All the best, guys. All the best. All the best. थैंक यू. मैं हम लोग का ऑडियंस सेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके यस सर आप देख सकते हो. ओके Okay, okay. विद दिस लेट्स टेक अ Sure. स्मॉल ब्रेक गाइस. अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. लेट्स टेक अ टाइनी लिटिल ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट द इवेंट फॉर द. एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था. Put your hands up. Okay, now let's start with our second guest. We welcome the directors of NIEM Kolkata, Mr. Anil Lalwani and Mr. Kundan Lalwani. So, Sir Anil sir, the direct the director of Good NIEM evening. Kolkata is. Good evening, sir. So, Anil sir, the director of NIEM Kolkata is the person guiding students to new heights that the students of NIEM will reach in the future. He is the person with utmost positivity filled in him. He has knowledge of not only event management but also of various other fields. Thank you, sir, to be with us. So now, Kundan sir. Kundan sir, the director of NIEM Kolkata, is a person who always motivates us to do great things in life. He is a person who spreads positivity in the students. He is the go-to person for every NIM student in case of any difficulty. He is also a role model of many of the students in NIM. So, sir, happy Event Managers Day. Happy Event Managers Day, sir. as we as we all are celebrating the event managers day, so let me tell you, event managers day
So you have to unmute your, sir, maybe you have mute your page. Okay, so we have Kundan sir also here. Hello sir, happy event managers day sir. Yes, Yogita, same to you and same to all the viewers. A very happy International Event Managers Day. So we are very happy to see you after so long. So let's start with most obvious question. Why do we celebrate Event Managers Day? So let me tell you, Event Managers Day is celebrated on 31st May as today is the birthday of Sir Arshad Hussain. He is the pioneer of management industry in Rajasthan. He has been giving lectures and workshops on event management since the last 15 years. So So with this, now we have lots of questions which our NIE students wants to ask you all. So let's move forward to all the questions. Yes, Okay. sure. So and I'd like to say my viewers, whatever questions you want to ask to sir, please drop in the Instagram, DM us in Instagram. Let's start. Talking with the directors of NIEM Kolkata. So we have some questions from audience. So let's start with the first. So do you think event managers are making India economically strong? Kundan sir? Yeah, yes, Yogita. It's a very good question. The reason being, uh, any young enthusiast who wants to take a career decision, for Mhm. him or her, this is a very important information, piece of information, and on that basis, one has to take the decision. Uh, Let me tell you the broad subject of advertisement, marketing departments. You name any advertisement companies, they have also felt, to open up a different, vertical altogether, where skilled peoples are required to arrange product launch, and any brand which is getting launched, event managers in the course of event management has a role to play. And this is the reason, the advertisement companies actually, when their business started shrinking, they had to think out of the box, and to grab that, piece of business which was there, they had to create those departments of event, persons who have the skill to manage the event. So you can understand the management of event is not restricted to only, celebration of birthdays, or anniversaries, or a wedding. It is beyond that, and that is the reason, because both myself and Anilji, when we clearly understood the need of the event segment in the other industries, and that is specifically the reason we thought, why not, uh, for leaving our corporate experience, we came to this field, and definitely we are committed towards this. And when we are saying this, that event is not restricted only to event industry, it is actually, having a role in all the product launch, whether it is, startup companies. We today we have, students who are working in app based companies. Now you can understand how the scenario is changing. There are a lot of, self employment verticals which are created, because the requirement of the creative needs which the event has shown. So definitely, when any industry is growing, it is growing not only, horizontally, it is growing vertically, which has got a direct impact, direct contribution to the economy of the country. And that is what makes this career very, very lucrative. And let me tell you, the students have to have the patience of getting the knowledge and then exploring this career. So I think I have answered. I've taken a little bit more time, because this is a very, very important piece of information which every viewer should understand. Thank you so much, sir. So we can say that event managers are economical warriors. So with this, I'd like to ask Anil sir, sir, how important is the communication in event industry? Anil sir, Communication. Hello. Yes. yes, sir. Am I audible? Am I audible?
Yes, sir. Yes, sir. The communication is a very important life skill. They call it as a life skill, Hmm. and in event industry it is more so. Why? Because in event industry, people want when they are coming, we need to understand the people, the requirement of the people. Now, to understand, there has to be a very perfect communication, which involves all types of communication, one to one or close-ended questions, and also to understand the wow factor. So, communication is the most crucial thing. See, we have seen with our experience, there are two types of event managers we have met. One who have very high technical knowledge, Hmm. but they are getting the events of mediocre quantity, mediocre size. But the other type is having knowledge, appropriate knowledge, but very good communication. So having a large events, large volume event, so you can understand not only the knowledge but also expertise, but also communication plays a differentiating factor. Becomes a differentiating factor between the level of event manager a person would like to be. So therefore, in our course also, we pay much attention to event communication. I think I've answered this question. Yes, sir. So thank you so much. So with this, sir, what personality traits, skills, and education do you think all event planners must have? Kundan, Yeah, the it question is is to me, Yogita. Yes, sir. One can reply. Yeah, Yes, sir. We can see, reply. yes, yes, yes. See, as you know, we all know that event manager is a role. An event manager has to be multitasking because he has to look after all the departments of an event. And as we say also that event, the entire burden of the event, the entire smooth execution of the event is on the event manager. Now, Yes. obviously, the personality traits which we are talking about, the event manager should have, time management, which is an inbuilt skill, which is, I think, the quality which an event manager should have. The event manager should be responsive because if his team of vendors working, if he is not responsive, he will not be able to get the work done. So it's a large team ranging from a labor class to an executive level to a manager level to a guest even, because he has to manage the guest also. So he has to have time management, he has to be responsive, he has to also have a very good grooming as well. He cannot be shabby when he's talking to his client. So a good grooming also has to be there, with the event manager. So it's a basically, a multi tasking and a multi, level of skills and, traits, personal traits which one should have. And above all, he should never lose his patience, something which we call as, because there will be challenging situations when you are dealing with vendors, when you are dealing with outside people. There are situations which will be looking out of control, and in that situation, if you are not having your cool to have that problem solving attitude, with your cool thought process, with your, so that is why we say that a person has to have a plan, and then you have to have the organizing skills, and also you need to have the execution skill. So all these personality traits an event manager has to execute in his day-to-day life. And I think NIM Kolkata has educated all its students in all these trades, and we are very thankful to have people like you with us. Thank you so much, teachers. Thank you, sir. And so, please tell our audience how they can improve themselves in lockdown time. Anil, sir, this is a question for you. see, for me, okay. Yes, See, sir. in lockdown, as we have been telling, uh, is the time when a person can take have little luxury to spend on certain skills which you would like to catch up.
Like, for Yes. example, I pick one, your competency in Excel. It is very much required going forward also. So Yes. if anybody knows, that is okay. But if you want to practice more and be faster, it will help. So this is one area. Second is preparing PPT quickly and preparing the presentation part of it. How to prepare present for presentation, and also getting an opportunity to do presentation. These three things are very important. Now, for those students who are in course, this is for in general, those who would like to do course and also not also doing course. But for those students who are already in course in lockdown, they should utilize this time, at least half an hour a day, to go through the study material or important points which they have already learned. Otherwise, whatever you have learned, if the gap is there, you will forget. And completing your assignment, and that is what we have been giving the students to do. Yes, we are getting lots of assignments. Yes. So, sir, according to me, after COVID, the event industry will go fastly. Am I right, sir? Kundan, sir, am I right that after COVID, event industry will grow? Let me tell you, Yogita, when the first phase of COVID came, there was a lot of apprehension within the minds of the people that, what will happen to this industry. And, good number of companies, they closed down or they, opted for other line of business. But, the sooner the cases went down and things started looking normal from December, January onwards. We saw the level of in the events which were happening, and definitely event is something which will not go away. Let me tell you what this COVID has brought in is something which people were calling it a new normal, but now this new normal has become a normal. Let me tell you, the element of post-COVID events are not going to be smaller in size. It is going to be bigger in size. Rather, the events, people, sitting at Kolkata, Anil ji and myself, we happened to attend one online, workshop. There, it was being told that, East India is lagging in terms of event industry. And it is, or not of that level events happen in East India, as Yes. we all know, if we compare with the western part of the country or the northern part of the country. But Mhm. we have talented event managers, event companies in Kolkata as well, in the eastern part of the country as well. Now the scenario which is going to come forward is that any part of the country you are in, actually sitting in that place, you can do a global event. Yes, sir. And so this thought was not there pre-COVID. This thought was not there. So Yes, this sir. has actually, added a new dimension in the minds of the event managers, that why not we do a global event, and then the finale of that event can be done in one city. So the preliminary round of events can be done globally. So this is one good advantage which has been added. You will find that a lot of app-based companies supporting the weddings, the social events. We know those social apps which are there. The apps which are there now, they are also making the contributing to the private events, the Yes, sir. virtual experience in a private event. So making things more uh, wow factors, adding more wow factors, because these wow factors were not there. Now these wow factors are being picked, and in a very nominal cost. It is not adding the cost. So the events which are happening in a particular city is not restricted in only that city. It is actually going beyond that city, and that gives the mileage to the companies who are actually thinking out of box. Now an event company which is based out of Calcutta can get a client, you know who is planning to do an event in sitting in Mumbai or Bangalore, because his event probably he has seen in the virtual platform. So Yes, sir. this is actually I'm telling you, this is actually going to give mileage to those companies who really have that level of knowledge and execution and creativity in the team.
So those companies are definitely going to be benefited out of it. So I will just, say one line and then, I'll answer this question is the event manager, today's event manager post COVID has to be more skilled. And if you want to get an edge, if you are not skilled with the technical aspects more, then definitely, the others are going to take away the share of cake from you. Okay. Events are So going to be bigger in size post COVID. so we can say that social media plays a vital role in event industry, sir. Yes, it is going to remain. Rather, it is going to make inroads. Okay. Okay, thank you, sir. And now we have some questions from our students. How can anyone reach the new clients? Anil sir, this question is for you. Yes. How can? How can Come again? anyone reach new? How can anyone reach to the new clients? Reaching to new plans require again a plan. Okay. I did not understood the question properly. What is the meaning of that? How can, pardon? How can Hello? anyone reach to? Hello, sir. How can anyone reach to the new clients? Like how we get new clients after doing one event? Okay, okay, very good. See, important part is the person has to focus on events marketing subject, whatever techniques you have learned. Now, if you are thinking for an event, let's say wedding. Now, if you're Hmm. looking for a wedding, you have to divide segment. You have to understand the segmentation part of it. And if the segmentation part is clear, let's say it comes around a community based. Now, if you are coming to a community, you have to locate where this community could be contacted. There are community, like for example, if you take Marwari community, there are lot many trust, so lot many groups, lot many Facebook pages related to that. Now you have to showcase your company to them. Number one, get the connections, contact numbers, mail IDs from them, and start doing cold call. The subject which is called how you build your clientele. So cold calls are to be done, followed by you can apply market research in which place there is going to be wedding, and then one-to-one personal contacts. So clients could be anyone can get the clients with this help. This is called this is from private event. Now from public event, if you want to do, then again you have to map the companies who are going to launch products or who are doing their R&R functions. Every year companies are doing R&R functions annually, so a track of that can be maintained. So to target that company, you have to have communication, do with cold call, then again it consolidate that calls and it becomes business calls. Anywhere and any place, if you want to build a plan, you have to go in a very systematic way. And the focus should be market segmentation, targeting, positioning, and then using your technologies effectively. Once you are able to, and nowadays social media is playing a very important role. Earlier it was not there. People used to spend huge amount of money. Now it is possible to get even a survey sitting at your home. Just with one person you are able to reach. So it is possible. Okay, thank you, sir. So, how do you stay motivated with this, with things going wrong? I can see you guys are so positive. So, how do you guys motivate yourself? Kundan, sir, you're so positive. Yes, very good question, Yogita. How to remain positive, especially when एक लॉकडाउन जब आया था तो we were told कि vaccine आने से everything will be okay. Now the vaccine भी आ गया and still we are, and when second phase गया भी नहीं है, people are talking about third phase. So Yes, a very relevant question. Let me tell you, it's very simple. If you love your work, if you love your work, yes, sir. never allow that love to fade with time. Okay, thank you, You sir. have to be, you have to be passionate.
For a brief, you may take, a brief moment, you may take a pause, you refresh yourself, you unlearn, and then you relearn, and again you are back to this. So what and I know, event managers, they are actually, you cannot sustain in this industry if you are not passionate about this particular field of career. So people are passionate, people are emotional. The only thing is, never allow the love to fade. So this is the key thing, which if you want to remain positive, I think this will help. Thank you, sir. I'll keep this in my mind, and my viewers will also keep this in their mind. So, tell me about the strategy of NIEM for students post COVID. And Anil, sir, what do you want to say about it? What are See, your strategies? What is the this NIEM is a strategy? yes. This is a actually learning from for us, which we took from first COVID. In first Okay. COVID, we had a great amount of learning, and that only we are going to apply. The first is we are going to start with a grand party once we are all physically available at institute. So Okay. to cheer up everybody, it should be a enjoyment and a unique thing which we should start thinking. Another thing Yes. is very important is uh, we are already given a birth to fashion show. We have already announced that we are going to do. It was Yes. scheduled to be on 6th June, but now 6th June is not looking possible. So as and when we open after 15th June, hopefully so, we should start working very hard and go for fashion show. So once you are back, united and charged with the help of that party, get together, physically able to meet, we go into our main thing, which is the dream project, is fashion show. And the previous question which I was talking of, how to get clients also for the event plan, Mm. will also be covered in that. And we would like to show, and we would like to be with students to help them how to get. And meanwhile, we wish Event Junction also, who is coming up with so many events, with so many these facets of the event, and they are also doing wonderful thing. Platform which they have created is fantastic. So now we are very much sure that fashion show also will be taking it with this their experience of doing this also in a great way. So this is our also plan already built in, but we are seeing it is already happening with the help of Event Junction launch and going for the event. So Yes, definitely we are sir. going to come with this. Yes, Um, so, so what was this fashion? You were talking about the fashion show. It is an in-house event or an out-house event? it will be outhouse event, inter college, which we have been thinking, which we have been planning. Certain amount of plan also has gone into it in classes. So that will be taken and reach to its reality after Okay. just after when we open. Okay. So, Kundan sir, what do you think about this post-COVID? Yeah, I think the question was not, there was lot, there was a hiccup in your voice. So if you can just come again. Kundan Yeah, sir, Yogita. Yeah. a strategy of NIM for students post-COVID. You see, as Anilji has already said, when you remember, we did an outhouse event in the form of Holi. If Yes, you sir. if you recall, the way we started after the first, COVID wave, we did 4 in-house events, and out of those 4 in-house events, 3 were in the institute, and 1 event we did outside the institute. And Yes. let me tell you, Yogita, and to all the viewers, शेर जब खून को चख लेता है ना, तो उसका जो अर्ज है वो बढ़ जाता है. तो Okay.
I tell you, as a team, an IM team with the students, as Anilji was already talking about the event junction, let me tell you, there is no reason why we should not be able to do a successful, ambitious fashion show. And going forward, this is going to be a very good learning platform for the students of NIEM Kolkata. You Okay. imagine we already have a research-based course which is in place. The practical events which will happen in the form of wedding, auditions, various IP events which happen in Eastern India. Over and above this, we have been doing this in-house events which we are conceptualizing along with the students. There, you are actually getting exposure of building an IP event. Okay. Right now, as I said, I just come back to what I said. शेर जब खून का स्वाद जब चख लेता है ना, which we have already tested in Rang De Gulal. That was a big success, and there are a lot of learnings which we have had as a team, as entire students who were there. We also had learning. Now we are going to use those experiences which we had, and we are going to overcome and do a much larger, bigger, successful event going forward. And this is going to help our students, which is obviously after second wave. Yes. दो मिनट रुक जाएगा. Yes. So I think there is a network issue with Yogita, sir. So let then we will start, sir. Sir, am I audible? Yes, Nitish, you You're are audible audible. but not visible. But you are not Yes, visible. yes, I say yes. Sir. Okay, sir. She was coming. Just yes, she came. Any questions? So I think योगिता का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर. सर अभी हम लोग ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि फैशन शो के ऊपर हम लोग एक बार जीडी की करवाए थे एक बार हम लोग अपना क्लास में सर. सो उस Yes. टाइम हम लोग सोचे थे कि लाइक जून 6 में करेंगे. सो अभी देखा जाएगा तो सर आप लोग हम लोग का अभी कोलकाता में ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि 15 जून तक लॉकडाउन गिर गया सर. सो देन अभी इसका लाइक क्या आप क्या सोच रहे हो सर? लॉकडाउन लाइक 15 जून के बाद भी खुलेगा, फिर हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे कि रेनी सीजन भी रहेगा और फोरकास्टिंग कैसा होगा सर? सो दैट्स वाई सर वो कैसा रहेगा सर वो भी देखना पड़ेगा सर. See, the second wave, which is many places across India, is trying to open. Even in West Bengal, they have started opening construction from Yes. today. The industries, construction industries, and the manufacturing have started with limited capacity, but they have started already. We have our relatives who have started this.
number of cases happening in West Bengal is around 12,000, and the success cure is happening 20,000, and around on an average 1 lakh is there. So it is going to be reduced in next 7 days time. It is going to be reduced, and once it reduces, it becomes a case of opening up. 7 days it will be more required people to come from different parts and settle down, and things will start doing. And this is the observation of the all medical experts also across India. They have, for your information, stopped manufacturing remdesivir. The direction has been given by all scientists not to manufacture. Yes. Why? Because this COVID second wave is now going scientifically also, and lot of vaccinations are coming, and by June, July, many people will be vaccinated. Things are improving from here, and it is hope is there that from 15th June things will start normalizing. And the event industry as such, there was one question in the previous time also, is going to grow at least 1.5 times. Why? Because number of weddings are not going to be reduced. The weddings which were reduced in first COVID time, the wedding which was scheduled to happen this time, is all going to merge and now it will be done in the time within the limited time available. The private event doesn't go away. Even in non-COVID situation, in COVID situation, anybody forgets to do birthday parties? No one. They will like to do in much aggressive way. So events increase in general. Number one. Number two, the product launches which has hold. Have you seen any product launches being done nowadays during this COVID time? No. But many scientists many product designers and others are working on product launches. So product launches will definitely happen. Many people who are working, companies are having work from home from long time. Now they see, as NIM, we are trying to do event once the things open, in-house event to refresh people. Like this, many private companies will like to do some or the other events to refresh their people, team members, once they come back, once the COVID is thing of past. Yes, third wave is also going to come, which is expected, but now India is prepared. Things will be taken care. And most important part is, from last 1.5 year, students were not going to come out. Class 10, 12 students, they were restricted so long. Schools were not opening. Now this big chunk is going to open now. After this second wave and third wave ka wait karke is over. This is going to open when the exams are finished. So you are going to get a large population. Now see, I was telling you the refreshment is required for NIM students. The same refreshment will be required for the students of different colleges who would like to participate in your type of event which you are coming up in Event Junction and also in fashion show. So people who are sitting home doing gyms and all those activities, they will definitely like to come out and participate in fashion shows and singing, dancing, beatboxing and so many things. So this period is going to be touched by two things. One, the events which will be done, there will be the more focus on youth. Youth will be the most, see, one for area of focus older generation is already given when the first wave was over, which was that the old politicians have started conducting rallies. They have done with confidently bigger rallies. उतना बड़ा rallies नहीं होता था पहले. They have done. Now youth will show them कि किस तरह से event पे खुलना है ना. जब वो लोग इतना rally कर सकते हैं तो हम लोग क्या नहीं छोटा-छोटा event कर सकेंगे. Events will be very big. सब elections and all will be back. Election के लिए भी तो नहीं हो रहा था ना event. वो सब भी बीच में नहीं हुआ ना. बंगाल में क्या कोई बड़ा event हुआ because of elections were going on. Other places also. So all these things will be passed. Now fresh में things will start happening. ठीक है? Any other question? लाइक जैसे कि अभी लॉकडाउन ओपन भी होता है लेकिन बिग अमाउंट ऑफ हम लोग का जैसे कि इवेंट्स इंडस्ट्री में ज्यादा फैलने वाला है, जैसे कि मतलब ऑल डे टाइप का अभी इतना लाइक इवेंट्स थोड़ा सा कम हो रहे हैं. सो जैसे कि कोरोना का केसेस एंड ऑल पैंडेमिक सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाते हैं और बहुत अदर कंट्रीज में मास्क भी अलाउ नहीं कर रहे. सो होप सो अगर हम लोग का इंडिया में भी अगर ऐसा न्यूज़ आ जाता है कि लाइक मास्क नहीं पहनने के लिए,
सो वैसा दिन देखने के लिए तो सब कोई वेट कर रहे हैं. Nitish, let me tell you, Yes, sir. uh, India may we are all well prepared, and the moment 70% population gets vaccine. When I'm talking about 70%, the rural and the urban will have a difference. What government of India is saying, by December we will have vaccination to 108 crore Indian citizens. But when I'm talking about the urban places, में दिसंबर तक वेट करना नहीं पड़ेगा. It will happen much before December. So once the 70% vaccination happens in the population, the fear of COVID will be very, very minimal, because internally एक immunity built हो जाएगा. And this is the time which we are all waiting for. And then जैसे आप now you see in Italy was the first country which was bleeding in the first COVID. Now they don't wear mask, and when people are actually coming out and having a good time, it is so heartwarming to see. And when we see them, actually we relate, कब ये मेरा दिन आएगा. So what I'm trying to say, it is not very far. It is a matter of maybe 2 months, 3 months maximum मेरे हिसाब से urban places में. Rural places में vaccination होने में और भी time लगेगा, but yes, urban places में things will look good in next 2 to 3 months. सर जैसे कि अभी वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं, so most of the cases after वैक्सीन भी थोड़ा सा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सर. सो हम लोग का माइंड में, जैसे कि अनिल सर पहले भी बोल चुके थे कि लाइक हम लोग सोचे नहीं थे कि आफ्टर वैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव केसेस आएंगे, लेकिन फिर भी लाइक एक तो डर बढ़ जाता है कि इतना खतरनाक लाइक वायरस फैल रहा है, जो वैक्सीन भी कुछ जो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं जो मेंबर्स पर्सन है. तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को हम लोग टैकल कर रहे हैं, खास करके ये इवेंट इंडस्ट्री भी. सो अच्छा लगता है कि लाइक हम लोग कर रहे हैं सर. See, vaccination is only going to give protection to its full potentiality when 70% of the population gets vaccination. So you have to understand this point. Vaccination to an individual is not going to give protection. Where you are living, at least another out of 100, 69 people should have also got vaccination. Then only the protection is complete. So this is what we are talking about, and obviously this will take time because more number of vaccines are there. So अब वो चीज होगा, and you are finding that vaccinations have started happening. People are not waiting anymore for the government. Housing communities में vaccination हो रहा है. Even आज I was just because I have also got some vaccinations planned for my family, which will happen in one of the alumni of the school is doing that vaccination. So I am also part of that. So I am getting both I am vaccinated. My wife and my daughter will be getting vaccinated. So you can understand, people, the general population is not waiting. I'll just take this opportunity. If anybody would like to get vaccinated in 2 or 3 days time, we will be announcing. अभी just हमको एक message आया था कि कोई भी NIM का स्टूडेंट कलकत्ता में वैक्सीन करने चाहता है, there is a company who is going to vaccinate. अभी just थोड़ा देर पहले message आया था. So this is the point. This is the point I am trying to bring forward. The number of vaccines are there already. And that vaccine is two vaccines are there. One is Covishield. One is Covishield. Another is Sputnik 5. अभी just थोड़ा देर पहले बात हुआ मेरा, just आप लोग से बात करने से पहले. So I said no, I am going in the meeting. Let me talk. Covishield to 100% is there. If anybody would like to do, if 18 to 44 years age, and also second dose, they will be able to provide. And another is Sputnik 5, which is going to be announced maybe in 1 or 2 days time. But I have asked, we will be working on the regularities and what will be the cost. You will ask, that we will be seeing. So if anybody will be interested, now it is going to become easy. Okay? So yes. So things are going to things are going to improve. Suvash has come with question. हम लोग को अच्छा गुड न्यूज दिए कि लाइक
आफ्टर 2-3-4 डेज हम लोग को लाइक वैक्सीनेट करने के लिए अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जल्द से जल्द हम लोग के एडमिन टीम्स एंड के तरफ से हम लोग को लाइक न्यूज मिल जाएंगे. So Yes, over to yes, we will be communicating, reverting We back to will. you, and we will take the names. If anybody is interested, we will connect and we will be passing on to that company. That is also an event company, let me tell you. Okay. So like in the pandemic situation में भी हम लोग का लाइक इवेंट कंपनी इतना लाइक काम कर रहे हैं. सो ये जान के बहुत खुशी लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री लाइक ग्रोथ होते जा रहा है दिन ब दिन इन वर्चुअली एंड फिजिकली कुछ भी हो जाए. सो ओवर टू Correct, सुयश. correct. Yes, sir. Yes. Yogita has some network issues, and I am here to move forward with you all. Sir, it is a question from one of our viewer. To this question is to Anil sir. Sir, please tell us how we can improve ourselves in lockdown time. The budding event managers can how they can improve in the lockdown period. तो क्वेश्चन पहले पूछ लिया तो. The Okay. question is coming in Facebook, sir. Coming from Facebook, sir. The viewers want अच्छा. you again. अच्छा, no problem. अभी just पूछा था. In Yes. lockdown, if a person wants to improve his skill, first the thing is if he is already a student or non-student. If he is already student, there is very simple thing. जो भी अभी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो और जो भी असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करो एंड रिमेनिंग थिंग यू लीव इट टू अस. नंबर 1. नंबर 2, you should be practicing because otherwise normal time में time नहीं मिलता है. Practicing this Excel part and PowerPoint presentation and उसका presentation करने की तैयारी करना, because this becomes a very vital thing. We have given example also. You have a expert knowledge, let's say out of 100, 50%, but you have communication out of 100. You are having full chance to become a most successful event manager. Rather, if you have 100% technical knowledge and 50% skill in communication, you will not be that successful as the previous category. So if that be so you should put your skill, you should harness your skill more on present communication, and that is very, very important. See, other things you will learn over a given period of time, but this thing you will not do. कोई आप अगर किसी फैकल्टी को पूछो कि आप क्या अभी प्रैक्टिस करना चाहेंगे एक्सेल में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दे विल नॉट डू. अभी उनका टाइम चले गया. They will not do. It is very difficult to do. There are very few people, these basic things के ऊपर they will put time. Even you also will not like. You ask Nitish sitting here, will he be liking when there is a normal time, event, everything is open? कि भाई आप कल ना प्रैक्टिस करना एक्सेल में. इसे अरे क्या बोल रहे हैं अनिल जी, ठीक है ना? But during this lockdown when you are sitting quiet, you have to discipline yourself and learn that. And once you are practiced well, once the things open, you need not worry. ठीक है ना? वही जो गैप्स है अपना प्रैक्टिस करना, या कोई है जिसका कम्युनिकेशन गैप होता है, तो दे शुड प्रैक्टिस एंड बाउंस बैक. दे शुड बी अ ट्रांसफॉर्म पर्सन. दिस इज द बेस्ट टाइम. Yes, sir. जैसे कि हम लोग कुछ And to add to it, what Anil ji is saying, even if you see the classes, the interactions which we have had with our students, largely we have done presentations, and we also intend to do the weak students who are not having Excel's का basics knowledge जिसके पास नहीं है, we intend to do small sessions, small group sessions with those group of students, because what we are saying here we actually have been doing same for the students. If you see Yes, the yes. classes which we had lined up. Yes, next Sir, question. here is one more question in YouTube. The question is in our DM. The question is to Kundan sir. I would like to know that how to do the pre-event meeting with the clients and the ways to deal with client
how to do the pre-event meeting. See, let me tell you, pre-event meeting may your focus should be to build PR with the client, and you should understand his needs. What is exactly the needs which he is having? So I think your major focus pre-event meetings जो होती हैं उसमें आपको उनका requirement समझना है and उनके साथ PR build करना है. Because next time when you are actually talking to him, the first interaction is through phone to fix up the time and appointment and the place. But जब आप एक बार मिल लेते हैं, if you have not used the skills of PR, building PR, जब जो next call होगा वो warm call नहीं होगा. उस call में भी warmth होना चाहिए. And when you are talking, you should actually be talking about the next meeting for few seconds only. You should be spending more time to build the PR. And you have already noted down his requirement. So first meeting mein, I think the focus should be on that. I think just I like to add, if Suvash tells, correct what Kundanji was telling. See, all the events, any event will have 5 factors: venue, decoration, entertainment, food and beverage, communication. They will have whichever event. जिस भी client को मिलने जाओगे उनके पास ये सब point रहेगा ही. The person who is going to meet has to build a PR. This was very well told by Kundanji. But one has to be understand what, see, the client will have requirement in terms of venue, in terms of decoration, in terms of event entertainment and all. The person has to understand what is going to be the wow factor for this person, client. While noting down, he should understand कि क्या उस client का venue is a wow factor, by interaction, food and beverage is the wow factor, event is the wow factor. That has to be noted by the event manager. And then after that, has to give the presentation based on wow factor. Because कोई client का अगर suppose wow factor है food, like हमारे राहुल गुप्ता या other people, for them they will be wow factor food. But अगर आप नीतीश जैसे क्लाइंट से अगर जाके बात करोगे तो वो बोलेगा इसमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ भड़कता, और उसको आप फूड का कॉस्ट बता रहे हैं, आई विल ब्रिंग फूड फ्रॉम दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस. बोले यार तो बाकी पैसा एंटरटेनमेंट में कम खर्चा करोगे, ठीक है ना. या फिर देवोमिता जैसे कैंडिडेट की बात करोगे तो डेकोरेशन में कुछ खर्चा ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना. So we have to understand, event manager has to understand, and especially if a person is a trained event manager, and more so if he is a trained NIM trained manager, he should be knowing to having the skill of finding out the wow factor of the client. And once you have found a wow factor and work on that, all PRs and relation and everything will be very strongly built, because you are touching his heart, you are touching his emotion. So that is the most important factor which has to take in. Next, Sir, I think the relationship between the event manager and the client is the most important thing. That is most important thing in the aspect that to get the new events, to get the next event of that client, surely, isn't it? correct. It's like Yes, create a yes. bond. It's create अगर a आप bond. किसी क्लाइंट को मिल रहे हैं और उसके फैमिली में कौन कौन है, वेदर इज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली और वेदर इज कितने Yes. डॉटर हैं, कितने सन हैं, कितने ग्रैंडसन हैं, अगर ये डिटेल्स आपको नहीं पता है तो हाउ यू विल बी एबल टू गेट, व्हेन यू विल बी एबल टू नो दैट व्हेन इज द नेक्स्ट इवेंट गोइंग टू कम. So Yes, you know, yes. PR is a very very important aspect. And what Anil ji is talking about, एक बार आपको जब उनका wow factor पता लग जाता है, the same person when he is getting his next child married और an anniversary होता है उनका खुद का ही 50th anniversary, तो उनका wow factor, तो देखो wow factor हम लोग बोलते हैं बट ये तो एक्चुअली शौक है, एक आदमी की लाइकिंग है, वो चेंज नहीं ना होती है. Yes, That sir, will yes. remain. Yeah. Okay, next question. Okay, over Sir. to Yogita. She came. Okay. Yes, sir. So Hello, Yogita, sir. all the Sorry best. for the inconvenience.
I'm so Yes. sorry when it's Yeah. network issue. So sorry, sir, for the inconvenience. Not an issue, Yogita. Nice to see you back. Thank you, sir. I hope my co-friends have done a good job. Yes. Yes, They have Okay. both definitely done Nitish good job. and Nitish went into more of COVID. He was trying to understand the COVID scenario. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Nitish Yes, should sir. meet Everyone wants to Mamta know that Banerjee, what is our going to CM. happen in NIEM. Yes, yes. Yes, what is the question? Come again. सुनाई नहीं दिया. So actually, everyone wants to know that what are the plans of NIEM and what are actually we going to do after this post-COVID. Yes, Kundan. yeah, I think we have already answered this question, Yogita, before your network issue was there. We intend to do the ambitious fashion show plan, which is there. Immediately when we open, we want to do a good, get together and charge up everyone. And then going forward, definitely, we have talked about why we want to do fashion show, because the activities which will involve the youth is going to get very good response. So youth fashion show with youth target audience is something which we are going to do. And already even Junction is doing the tap the talent virtual Tap into it. event. Tap into it. Tap Yes, into sir. it. Tap into Tap into talent. the talent, tap into talent, they are already doing. So this Yes, is sir. actually one Yes, step, sir. so we also want to take that thing forward, but in a physical form, not in the Yes, virtual sir. form. Yes, So sir. that is what we intend to do. We will do, sir. So would And you like to share some experience of the event as you have shared in the class itself? So some more experience, no. Experience as in, as in some problem which you have faced in the event Sir, or sir, something. like the students in NIM will Ye- are going into many events. The students will go Yes, in sir. events and they enjoy and they learn the things. So the problem, Problem the that they problem are is the facing and you all students. have to go through it. Hello. Yes. yes, see, I'll tell you, we have, when we started this journey, uh, our students, they used to come and tell us, and when we used to tell them कि आप presentation दिखाओ about your observation. Yes. And there has been presentations wherein the person comes and says कि sir मेरे पास तो कोई काम था ही नहीं. I was actually relaxing and chilling for the entire day, and I had nothing to learn. Now that is a challenge, because we are sending a person, and he's supposed to go to the event and do and perform a role and do the observation part. So we started thinking about it, that our person, when they go for an event, obviously, see, when you go for an event the last day, you cannot be assigned a very important role of an event. You have to understand, because there you are going, and there will be a portion of the execution part will be given to you. Okay. And there also execution mein there are people who will be helping you to do. Now observation jo hai, it is going to be the same for the person who is doing this job or who is going and attending this event. For observation, the platform is same for both. A person who is planning and doing this event, and the person who is going on the last day of the event. And this is what, how we transformed this entire thing by bringing in a 4 page presentation. When you see nowadays, when we do the coordination PPT, when we Yes, ask our yes. students to do, there has been a marked improvement in terms of the observation which our students they do. People, they talk about the event, the type of the event, and the various roles which were there. They talk about the venue, they talk about the wow factors which they saw, they talk about the production. So entire the F&B, the entertainment, they talk about the minute things which they observed, in terms of a tablecloth, or in terms of the ribbons which were tied, in terms of the flowers which were there. How many, people have also talked about, when they observed the backdrop, flower backdrop was a mix of artificial and natural flowers. So these observations, when
And this is the challenge which we used to face initially. Our students, they used to go and they used to come blank. Now, when we have given them this, blank PPTs and this presentations, we ask all the students to see. So they get the idea as to when I am going to the event, I have lot of things to see, right from the help desk to the wallet part, everything, people start observing. And this is used to be a challenge to us in the initial days. So I think this is one example. There are many such examples which we have faced, and there are lot many examples. And post Thank you COVID, I so can much, assure sir. you there will be, yes. Okay, And yes, post sir. COVID, I can assure you there will be not many problems related to number of events. There are so many events lined up. Just there, Yes, people are waiting when the COVID across India will go away. And other parts of India, you are seeing it is going away. Now, it is only our West Bengal which has started lockdown little late. It is also going, it will go away. So things we are hoping will become more than normal because COVID is going to become a thing of past. thank you, sir. Thank you so much, sir. I hope our audience have learned a lot from you guys. So now I'd like to thank the directors of NIM Kolkata for their valuable presence with us. Thank you, sir. And sir, would you like to say something to our audience or about our tap into talent? We wish tap and tell into talent all the best. And Thank So much, sir. actually, when we Thank are you. wishing them, we are wishing ourselves also. Yes, Please sir. understand. If they are successful, like Firestone, if they are successful, they were there in our previous session. We were one or two sneak we had. So it is we are becoming happy. Okay. So this Sure, is yes, sir. one sir. thing, and our thing is that students who are there in this show should enjoy. See, happiness is such a thing. If you don't have, how you will give to somebody? Have you Yes, sir. seen that somebody is not having happiness, giving to somebody? It is not possible. It is philosophy though, but it is not possible. So you create happiness among yourself, and then only when you are coming to give happiness to others. See, your main as an event manager, your main job is to give happiness to people. Wonderful. See, you may be doing event planning, scheduling, checklist making, all these things. Why you are doing? क्या ये पहले नहीं होता था क्या? सब होता था. आप होस्ट को ये हैप्पीनेस देना चाहते हैं कि जिस इवेंट के लिए वो एंजॉयमेंट के लिए करने जाता था, लॉट ऑफ द हैप्पीनेस को गेन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो इवेंट के निटी गिटी में ही फंस जाता था और इसी जगह पे आपका रोल शुरू होता है. तो इफ यू आर गिविंग हैप्पीनेस टू देम, यू शुड ऑल्सो बी हैप्पी. तो अभी जो आपके पास टाइम है, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड लर्न टू मेक पीपल हैप्पी, एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन योर सिटिंग होम. इफ यू गो विद दिस थॉट, तो कुंदन जी एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे ना पहले, वही आंसर है कि इफ यू वांट टू, व्हाट इज द वे टू मेक अ वर्क ग्रेट? नो अदर वे इज देयर. इट इज ओनली टू लव योर वर्क. You will be able to make it great. All the best. Kundan, if you want to tell Thank anything. Yeah, I would like to, wish, and definitely, as Anilji said, Event Junction, for that matter, any initiative which our students take, when we interact with them, it is not the interaction which we do to them only. Let me tell you, if we interact half an hour with the team of Event Junction, उससे कई मिनट ज्यादा, कई hours ज्यादा, Anil ji, myself, Jyoti ji, Rakhi ji, we interact among ourselves. Why? Because when in the planning stage, if all of us, when we are aligned, because you people are depending on us to get the guidance, आप हमारे ऊपर पूरा निर्भर करते हैं कि सर हमको बताएंगे कि कैसे इस चीज को आगे ले जाना है. So there, the entire admin team is aligned. Let me tell you, Yes, sir. and your success, actually, आपके success में हम अपना success देखते हैं. So it is not only in words; it is actually in practice also. You have chosen a very auspicious day to launch your company, Event Junction. Let me tell you, you people are full of passion and energy.
I don't find any reason why this event should not be a successful. मैं एक चीज पहले से ही बोल देता हूं, अगर सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो भी मैं मॉर्निंग में आई हैव यूज्ड वन फ्रेज, सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती है, लेकिन अब अगर आपने ठान लिया है तो वो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी. With this thought, Thank you. all the best and wish you all a very happy International Event Managers Day. Thank you so Thank much, you. sir. Happy Women's Thank Day, you so sir. much, sir. Thank you, Happy sir. Evening Managers Day, sir. So we sign Thank off for the you. day. All the best to Yes. all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you Thank so you. much, Thank you, sir, sir. for your presence. Registration for Tap into Talent will start from tomorrow evening. You will get live updates on Instagram handle of Event Junction. So go follow our Instagram handle and like us on our page. Thank you, sir. Thank you, everyone. And so now I would like to introduce you all to our special guest, Mr. Yash Solanki, is the owner of Smile Events and a YouTuber. He has the vast experience in field of event management. Let's hear the journey of Yash Solanki from himself only. Hey, hi. How are you Hello, guys? Yash. Thank you Hello, so much Yash. for having me. Thank you, sir, and happy Event Managers Day. Happy Event Managers Day to you and all the chat and everybody. Thank you. So, Yeah. what do you want to say about this day and about your journey? I think this day is such a beautiful day, and I already had one stream just now on my channel, and which was so beautiful. Interview, and I just enjoyed a lot, and this is the first time which I am celebrating event managers day, because iske pehle every day, every time whenever this day used to happen, I used to either have an event or I was traveling or doing something or the other thing, but this is the time where I am enjoying, and it is such a great day to have, and such a great day to be on your platform as well. So I will try to share as many thing as I can and be as transparent as possible. Okay. So, sir, as I know that you have your own company, Smile Event. So, I want to know how Yeah. did you start your event company, Smile Events? Okay, so when I was in college, I always wanted to start something. So not even college. When I was like in fifth standard or sixth standard, I always wanted to start something of my own. But when I grew up in college, and during that time, yeah, suddenly it went off, right? Like, because everybody in my group was doing CA, engineering, or all those kind of stuff. So I opted for CA. I took up CA and I cleared IPCC का one attempt, and उसके बाद में my dad was into catering. So during vacation I went to his event, and I saw that my dad is only handling the food and beverage part, but there are so many. There was a guy who was everywhere, who is coming to us telling something, who is on stage, who is handling choreography, who is handling photo video. I was like, wow. If I But the client is same, right? The client is same for him, client is same for me. I already know that client, I'm taking contract for catering. So I thought, why not I take the whole event ka wedding, pura event, wedding ka event. And that is when I thought that I want to become a wedding planner. But I knew how to become a professional wedding planner, since my dad was into catering business for like 10, 12 years, usse bhi zyada. But I didn't knew how the professional company works. So I did a course, and uske baad mein I joined a corporate event company, because first I didn't get the wedding planning job in the first go. So I joined 77, but with the thought that in 77 there is also Varvadu, which is a wedding company. So I'll switch once I get into that company. But once I got into the 77, I got to know that Swaha is another wedding company, which is a very good wedding company, and I just want to learn from them how to do a wedding and all those kind of stuff. I joined Swaha, and then I thought कि एक साल से ज़्यादा I'm not going to work in any other company, because मेरा last goal is to do business, and I always wanted to be in business. So जैसे ही 1 year खत्म हो गया, I started my own company. First client की जो journey है, I didn't knew anything, right? I there? I can't see you. Yeah. Okay. There is a So problem with her network, so we can continue with Yeah, Suyash sir. Patel. You're audible. sure, So, sure, sure. yeah. Hi Suyash. Hi Nitish Hi. Kumar.
Happy managers, event Thank you. manager. Happy event So managers day. Happy event she managers day. claimed, Yes. okay, yeah. So there are some network issues. That's why. Not We, a Yes, problem. so we, we Not a have some network Please issues. continue. Continue. So I yeah, hope we'll be able to manage this network issues. yeah, not a problem. Yeah. So Yes. I was yeah. So I didn't knew that I am about to start my company so soon. I did a 1 year of job, and I think in December 14 I have resigned already, and on January 14 it was my last day. And I during that phase, but I had the habit, if whatever I'm going to start, I'll start to promote it from the day one. So when I was in college, I always used to tell my friends, "Okay, I'm going to start my wedding planning company and this." So on the day when I was just about to resign, I got a call from one of the client कि Yash, you are a wedding planner, right? मैं बोला अभी I am working in a wedding planning company, but I haven't started my own company. So the client said, yes, I know, but मेरे को वो company से manage नहीं कराना है. I just want you to come and I just want you to come for the meeting. I was not at all ready. मेरे company का नाम नहीं था, company registered नहीं थी. I didn't have any partners, I didn't have any vendors, nobody. So उसके बाद I thought कि it's an opportunity, and the venue was a lavish wedding. ऐसे छोटा wedding भी नहीं था, बहुत बड़ा wedding था. So I was scared कि ये wedding मिलने वाला तो नहीं है. I'll just try for it. So I just went for the meeting. 2 दिन सोया नहीं, presentation बनाया, meeting के लिए गया, and client ने बोला इतना सब तो मैं आपको नहीं दूंगा because you are the first timer, so I'll just give you the बारात वाला part. So बारात आप manage कर लो. मैं बोला Okay. ठीक है, इतने बड़े wedding का बारात भी मिल गया तो it's very good. सो आई सेड यस. उसके बाद में धीरे धीरे बात आगे बढ़ी. बारात से वो लोग ने मेरे को वेडिंग दिया, वेडिंग से वो लोग ने संगीत दिया, संगीत से दे गिव मी द रिसेप्शन, एंड आई मैनेज द होल वेडिंग, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. 3 days before the wedding I didn't knew that my company is going to be called Smile Events. The reason I kept it Smile Events because मैंने बोला अब मेरा इवेंट आने वाला 3 दिन में, जहाँ पे 500 लोग आएंगे. आई डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, मेरे पास कार्ड नहीं है देने के लिए, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ताकि आई विल प्रिंट द कार्ड. सो I thought of very random names. उसके बाद मैंने बोला what is the one thing I love? So I love smiling and I make everyone smile college में. तो I thought कि smile events रख देते हैं. Smile events ने first event कर दिया. At the end of the reception, client got to know कि मेरे company का नाम Smile Events है. So that is the journey about getting into weddings. मतलब you started your name with out of blue, मतलब ऐसे ही बस ऐसे नाम रख Yeah, दिया. ऐसे ही नाम रख दिया. बस But smile, you have a but beautiful I just name love. like Smile Events. Yeah. Yes, so it's a beautiful name like Smile Event. We all love to smile and yeah, it's very beautiful. ये वैसे मेरा second question यही होने वाला था कि आपने अपना Smile Events क्यों रखा अपना company का नाम? But you have already said. So how do you feel to be involved with Event Junction? I feel great. Like you guys are doing such a great job, and trust me, this is the thing which I want to tell. If you are an event manager, see, this is completely new thing, right? You don't know about how this Yes, event sir. thing is going to work, but this is the first step towards making something big. Because as an event planner, मेरे को भी नहीं पता कि next client कहाँ से आने वाला है. What am I going to do the next? First Hmm. video बनाया, I didn't knew where these videos are going to go. I didn't knew once I made this wedding planning का video मेरे birthday पे, and now it has like 80,000 views. I never knew that wedding planning का भी video को इतना देख सकता है. 80,000 views are such a great thing. उसके बाद तो मेरे को वहाँ से clients and everything. But this is the first step. Like even to think कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है. That is the biggest thing when you come into this event industry. Things can be different for everybody. Like मतलब Okay. सबकी जर्नी अलग हो सकती है. Your journey might be from this, यहाँ से you never know. So I always tell this one thing: you don't know what is going to happen. Just try and देखो, अगर अच्छा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो you learn something. Yes, so thank you so much. So, sir, tell me about the time you had to deal with the last minute changes on unexpected situation. Like ये तो हमेशा होता है हर एक इवेंट में कि हम लोग का लास्ट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है हम लोग क्लाइंट्स के थ्रू. Yeah. तो हाउ डू यू डील विद इट? Every event पे it happens. So क्या होता है ना, whenever you book an event, आप client close करते हो, आप बहुत खुश होते हो. So you become very happy कि अरे एक नया deal crack किया. Every time there is going to the event is going to happen, एक दिन पहले आपके पेट में ये गुड़गुड़ चालू हो जाएगी. ओ कल कोई वेंडर धोखा तो नहीं देगा, something will not happen, ऐसा कुछ तो नहीं हो Yes. जाएगा. So एक दिन पहले हो जाएगा. But as an event planner, the moment I step into the venue, I get into the zone कि अब कुछ भी problem आने दो, I'll
find a solution for it. Because see, I am the owner of the company. If I get scared of any problem, my team is going to scared the most, and everybody, client is going to scared, Yes. everybody is going to get scared. So event पे जाने के बाद I have this attitude, let it be any problem, I will find a way to solve the problem no matter what. And every event has some problem. So वो तो आने ही वाला है. So you make the mindset problem आएगी, जो आपने नहीं सोची वही problem आएगी, and you will have to solve it anyhow. ओके, सो सर कोई ऐसा फनी या फिर मोटिवेटिंग कुछ ऐसा स्टोरी है आपके पास हम लोग को शेयर करने के लिए कि आपने कुछ किया और कुछ बहुत फनी सा हुआ आपके साथ इवेंट में? Funny सा आई डोंट नो, फनी सा एक स्टोरी है मेरे पास, बताता हूँ मैं. सो व्हाट हैपेंड, एक है ना, हम लोगों का बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत ग्रैंड स्केल का इवेंट था, बहुत बड़ा सा बैंड आने वाला था. सो बैंड पे भी लाखों रुपए खर्च कर दिया हमने, मतलब क्लाइंट ने भी खर्चा किया, डेकोर पे किया, प्रोडक्शन पे किया, सब पे किया, साउंड सिस्टम टॉप क्वालिटी का लाया, सब कुछ लेके आए. द ओनली थिंग विच वाज विच द डेकोरेटर वाज गोइंग टू डू वाज जनरेटर. ठीक है, अब सब कुछ चलने वाला है जनरेटर से, लाइट्स आर गोइंग टू वर्क विद जनरेटर, साउंड भी जनरेटर से चलने वाला है. एंड उसने जनरेटर, दे डिलेड द जनरेटर. उसके बाद में हुआ क्या, द ग्राउंड वाज वेरी लॉन्ग, राइट, 200 स्क्वायर फीट, 200 मीटर्स का वायर लगने वाला था वहां पे. 200 मीटर्स में सिर्फ 10 मीटर्स कम था वायर. द पॉइंट वाज हियर, द अदर पॉइंट वाज हियर, एंड वो दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्शन वाज वेरी लेस, राइट. इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, माय शो इज अबाउट टू रन, बस इतना इतना कनेक्शन होना है. बट अब वो वायर बड़ा तो नहीं हो सकता ना, वो स्ट्रेचेबल नहीं है, वायर नहीं है. अब वो वायर ना तो ये जनरेट आगे आ सकती है, ना ये वायर आगे आ सकता है. सो वी आर इन अ सिचुएशन, 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक हम सिर्फ वेट कर रहे हैं नया वायर आ जाए और सिर्फ 10 मीटर का ये हो जाए, ताकि मेरा बैंड टेक रिहर्सल्स कर ले, मेरा साउंड चालू हो जाए, मेरा जनरेटर चालू हो जाए, एवरीथिंग इज ऑन टाइम, बट 10 मीटर वायर कम पड़ गया. सो दिस माइट कॉल इट फनी, और बट उसके बाद में वी मैनेज वो वायर को पूरा अनवायर किया, उसको स्टेज के आगे से लिया, कारपेट के नीचे डाला, एंड उसको वी मैनेज टू कनेक्ट. साउंड चालू हुआ, थोड़ा सा डिले हुआ, बट वी मैनेज इट. दिस वाज द स्टोरी. So good, sir. Literally so happy to listen this. Like, Yeah. सर आपका स्टोरी सच्ची में बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है. तो हमारे जो एक व्यूअर है उन्होंने ये क्वेश्चन किया, टिप्स अबाउट वेंडर मैनेजमेंट, लाइक हाउ डू यू मैनेज द वेंडर्स? Yeah, see, the thing about vendor is now you have to respect your vendors and you have to treat them as a part of your company. Now, this is one thing at Smile we follow like very passionately, and उसको एकदम seriously follow करते हैं. So if I tell you the team member जो starting में first event में जो हमारे team members थे, they are till now working with Smile events. जो first event में जो vendors थे, they get first preference to work with Smile event, because they know कि if Smile event is doing something in the market, they are automatically getting work, they feel more secure. And when in times if there is difficulty कि Smile events को वो contract lock करने के लिए there is budget का problem या कोई भी XYZ problem, the vendor is there behind us. Vendor बोलेगा अरे आप रहें तो हम संभाल लेंगे. So that is what team में भी, if you have, there are, let it be any days, like many event planners feel so stressed because अगर वो heavy dates होता है तो वहाँ पे अच्छे team members नहीं मिल सकते. But that is not the case with Smile events. We just drop a text and everybody blocks the date. So there is a girl in our team. What happened is, this is a wonderful story. So we booked her for one event, and which was coming in 2-3 months, right? So उसको एक महीने पहले she didn't remember कि there is this event which we are going to book, and उसने 10 दिन का US का event ले लिया. Now 10 days international event and 1 day with Smile event. So उसके बाद में we just gave her reminder call कि अरे ये event का date था, and she was like अरे मैंने ये event ले लिया गलती से. मैं बोला कोई नहीं, we'll manage something. Next day she called, हमने US का 10 दिन का event cancel कर दिया, I'm coming to your 1 day event. So which freelancer does this? US का 10 दिन का trip कौन छोड़ता है एक event के लिए? But then we told her no कि नहीं ये event अभी तेको नहीं आना, you go to that US event. So it works vice versa. You take care of them, they take care of you. ओके, सो मतलब आप अपना पूरा केयर करते हैं सारे वेंडर्स से, यू ट्रीट देम वेल, सो दे आर सो गुड विथ यू सर, एंड आई होप कि वी ऑल डू दिस सेम.
या सो मेरे टीम Okay. मेंबर्स कभी भी इवेंट पे आएंगे, उनको खाना टाइम पे मिलेगा, उनका खाना मैनेज करने के लिए एक जन होता है, उनको सोने के लिए अच्छा सा रूम मिलेगा। सो बिकॉज मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बोलता हूँ, क्लाइंट बोलता है अरे आपके टीम मेंबर्स यहाँ पे रह लेंगे, मैं बोला पूरे दिन मेहनत वो लोग करने वाले हैं, आप तो इवेंट पे एंजॉय करने आओगे, पूरे दिन वो Yes, लोग को sir. एफर्ट डालना है। सो दे Hmm. नीड टू बी, उनको फूड टाइम पे मिलना चाहिए, उनको रहने को टाइम पे मिलना, उनको रहने को अच्छी जगह मिलनी चाहिए, सो दे कैन फोकस मोर ऑन द वर्क। सो दिस इज द थिंग व्हिच आई वुड टेल एनी इवेंट प्लानर कि अपनी टीम्स और वेंडर्स का ध्यान रखो। Okay. Thank you, या sir. मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. This is really very important. Everyone should know this. So, sir, do you think event managers are economical warriors? आर I missed your Economical question. warriors. Sir, Yes, do I you think think so. event managers are okay? Yeah, yeah. We got it. So I always tell in whatever stream or everywhere I'm speaking, event managers are real life Avengers. Right? We do everything. You just give us anything, we'll do everything. So event industry is so big, right? So I always tell that event managers are real Avengers. उनके पास सुपर पावर है. If you tell me tomorrow यहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी है, भले कोई और नहीं कर पाएगा, I'll do it. कोई बोलेगा प्राइवेट जेट कल बुक करना, I'll book it. Anyhow, we have the skill in us के जुगाड़. That skill is called जुगाड़. We are everything, we can do anything. So yes. Thank you so much, sir. Sir, what do you do when you feel stressed out during the event planning process? I smile. Yes, so What your event company says. yeah, so I try to keep the environment light for everybody. So you'll see, I am a kind of event planner who will Okay. not shout at venue very much, right? I'll be very calm, मतलब because वो situation आ चुकी है, अब उसको calmly handle करना है, team members को भी calmly handle करना है, jokes भी around, you have to joke around because situation automatically gets stressed out, because अगर आपका कोई 10 बजे आने वाला था सुबह और वो नहीं आएगा 10:30 तक, तो client is going to come on you and everything is going to happen, so stress तो आने ही वाला है। So वो है stress है, Yes, आता sir. ही है, but I just try to keep as much calm to myself so that everybody around me is calm and they keep on smiling. Okay, thank you, sir. So, sir, is it the right time to start a company due to this COVID? Like we have started our company in COVID. It's the best time because all many of them are shutting the company, right? As Warren Buffett say, market ऊपर जाता है तभी नहीं खरीदते, market नीचे जाता है तभी खरीदते हैं. So it's the best time to you have time to learn, you have time to establish your company or internet, because that's the most important part. Because मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आज से 2 या 4 साल बाद जो कंपनी इंटरनेट पे नहीं है ना, वो कंपनी ही नहीं है. So that is not a company. You have to be an. So this is the best part. You guys are doing on the great. You guys are on the right part. You guys are marketing. You guys are doing new things. So this is the best time to learn new skills and all those kind of things. So it's the best time. So Okay, thank you I so much, sir. am Sir, busier in lockdown than I was busier before lockdown. oh, it's very good, sir. It's really very inspiring because we have started our new event. So, sir, as I am a girl, is there scope for girls increasing in event industry? Is this your voice is cracking a bit? Is is there a scope for girls increasing in event industry? Yes, yes. So see, girls are naturally managers, right? Girls are so perfect at managing their stuff, and whether it's studies या कुछ भी देख लो, मतलब हमेशा स्कूल में भी देखोगे तो 70-80% गर्ल्स विल गेट गुड मार्क्स, whether मैनेजमेंट होगा तो गर्ल्स विल गेट गुड मार्क्स. सो मेरे टीम में है ना मोस्टली गर्ल्स, सो बहुत लोग बोलते हैं कि गर्ल्स कैन नॉट डू प्रोडक्शन. इन माय टीम गर्ल इज, हमारे टीम में एक लड़की है जो पूरा प्रोडक्शन हैंडल करती है और जिससे सारे लड़के और वेंडर्स डरते हैं. अगर उसने कुछ बोल दिया, वो वेंडर्स मेरे को बोलते हैं अरे ये इसको कहाँ मेरे पे हमारे नंबर दे दिया, शी इज लाइक बिहाइंड अस. सो perfect with their work, they are so managed, so organized in their head. So I think this is the perfect industry for them as well. So except for they should like the work. So it is industry, and the scope is also increasing because see, when it comes to creativity or so many things, girls have it naturally in them. So yes, anytime it is for girls.
Thank you so much, sir. You know what? Even I have heard a lot of this thing. कि यार तू तो लड़की है, कहाँ production करेगी यार, hospitality में चली जा and all this thing. You know, it's so demotivating when people say all these things to us. And a उन लोगों person ने like स्माइली you इवेंट्स is के साथ actually काम नहीं motivating us. Thank you so किया. much, sir. Yeah. So they might have not Thank you so seen much, girls. So sir. I have seen girls working. मतलब अभी the previous interview which I took मेरे जो चैनल पे उसमें there was पूजा दोषी, right? उसने 22 years की एज में अपनी कंपनी स्टार्ट की एंड उसके बाद शी इज अमंग्स द टॉप डेकोरेटर्स राइट नाउ, राइट? उसका पूरा प्रोडक्शन हाउस है, शी इज मैनेजिंग टीम एंड सो मेनी थिंग्स शी इज डूइंग राइट नाउ. सो if a girl thinks कि मेरे को ये करना है, she'll do it anyhow. So this is the most asked question on my channel also. But जितनी लड़कियां मुझे भी मैसेज करती है, मैं बोलता हूँ go for it, you'll do better than anyone else. Thank you so much, sir. Okay, sir, tell me how do you handle conflicts between team members during event planning process, like your own members? Yes, so it happens a lot. Many times it increases to a point that they start fighting or something. So you have to be, so overall क्या होना चाहिए ना, आपकी इमेज एक ऐसी होनी चाहिए कि आप हो तो वहां पे हंसी तो है ही, बट दूसरा है कि अगर आपने कोई चीज बोल दी वो चीज भी होनी चाहिए. मतलब आपका वो दोनों होना चाहिए, आपका खौफ भी होना चाहिए, आपका अच्छी एनर्जी भी होनी चाहिए. बिकॉज यू नीड बोथ काइंड ऑफ. वहां पे कोई कोई ऐसे लोग आ जाते हैं टीम में जो बिना डांटे या बिना चिल्लाए काम नहीं करते. सो यू हैव टू क्रिएट एन इमेज कि जब आपने सीरियस मोड पे हो, आपने बोल दिया ये काम होना है तो वही काम होना है. इफ नॉट उसका कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकता है ना. वैसा भी होना चाहिए. सो इट इज वेरी नेसेसरी इन इवेंट्स कि अगर आप ऐसा सोचोगे हम सिर्फ हंसते हंसते काम करेंगे, वो भी नहीं होता. समटाइम्स मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे इवेंट्स पे आते हैं, कभी कभी मेरे को वो एनर्जी भी इतना इतना हाइपर होना भी पड़ता है, वरना वो इवेंट नहीं हो पाता उस टाइम पे. सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी. Okay. Okay, thank you so much, sir. So, sir, what is the time-saving tips in events? Like, how can we save times in an event? So first thing Audible. is the yes, yes, you are audible. You are audible. Okay. So time saving tips in events are, so first of all आपके है ना vendors को ये पता चल जाना चाहिए कि आपने so whatever time, so India में ना this is a culture कि if you give someone a time of 9 p.m. they'll think कि event तो 10 बजे का होगा and वो 10 बजे के हिसाब से वहाँ पे निकलेंगे. And sometimes you might be genuine कि 9 बजे event Hmm. start होना है but vendors might come at 10. राइट, बिकॉज दिस इज द थिंग, दिस इज कल्चर. क्योंकि हम भी वही सोचते हैं, गेस्ट ने अगर 7 बोला है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये 8 बजे आएंगे, 9 बजे इवेंट स्टार्ट होगा. हम वेंडर्स को 8 बजे बोलते हैं, वो 9 बजे आते हैं. सो इट इज ऑलवेज डिलेड फ्रॉम द टॉप साइड. बट वंस स्टार्टिंग के इवेंट्स में देयर माइट बी प्रॉब्लम, बट वंस यू मेक क्लियर टू योर वेंडर्स कि टाइम इज द फैक्टर व्हिच आई वांट, कि ये 9 बोला तो 9 के पहले ही आना चाहिए, वरना दिस माइट बी द कॉन्सिक्वेंस. और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या दिस माइट बी इन रिटर्न कि ये टाइम से डिले हुआ तो आई विल बी डिडक्टिंग दिस मच. सो इफ वंस यू मेक एन इमेज कि यू आर अ कंपनी हु फॉलोज टाइम, एंड उनके आने के बाद आप उनको वेट नहीं करा रहे, वो 9 बुला है तो उसके बाद में देयर इज, यू आर रिस्पेक्टिंग देयर टाइम ऑल्सो. सो टाइम इज लाइक रिस्पेक्ट. इफ यू रिस्पेक्ट देयर टाइम दे विल रिस्पेक्ट योर टाइम. एक इवेंट में आपने उनको टाइम पे रिस्पेक्ट कर दिया, दे विल हैव इन माइंड कि हाँ नहीं, दिस पर्सन इज जेन्युइन, ये हर जैसा नहीं है. सो it is the image that you have to build. Actually, sir, this is true because I have faced this problem that they call us so early, but they start the event so late. So it's like we are wasting our time being there, just like that. So I Yeah. think time management is very important, and you do this. So thank you so much, sir. So, sir, how to give a wow factor to a client? Like always, a client asks for something new, something unique. So, what do you present? Yes, so see this, you just break down. What? Yeah, yeah. Now you're audible. Excuse me? So no, your video is and audio is just breaking a Okay. bit. Okay. Yeah. Okay. So So. creativity is there in this industry. Like, matlab, every, so the major thing is you have to be in the trend. You have to follow everyone who is the better than you.
right? Because if I'm a wedding planner, there are other wedding planners who are doing better job than me. They are doing some, Yes, executing some sir. good ideas. So instead, so what I do is, मैंने ना अपने Instagram पे I have unfollowed all my friends. I just follow top event companies, top wedding companies, top blogging companies. So whenever I am doing time pass on Instagram also, I'm going through some pictures, inspiration and all those kind of stuff. उससे कोई inspiration आता है, I have a diary which I write them, and उसके ऊपर I sit and think. Brainstorming is the key, where you'll get a lot of ideas. And ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी देयर माइट बी अ पार्ट के जहाँ पे ना बहुत आपको खराब खराब आइडियाज आ रहे होंगे, बट यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, पता नहीं वो आइडिया भी कहाँ काम आ जाएगा. सो इट्स फर्स्ट थिंग टू बिकम क्रिएटिव इज understanding your client is also very important, because see, creativity is also not what you want to do in your events. It's what client want there in their wants in their event, right? Abhi jaise example, client groom likes Shah Rukh Khan a lot, right? Now you get some ideas. Groom like fitness a lot, he likes gym, right? Usko he might, Hmm. the bride might like a rose or दूसरा कोई भी flowers उसको बहुत पसंद होगा. So you might get this ideas from client only, because हर client की needs बहुत अलग होंगे. One of my client like elephants a lot, one of my clients like horse a lot. So we made a lot of themes on पूरा elephants पे theme बनाया, horses को reference लेके बनाया. So this is how you can come up with new ideas by connecting the dots, कि client को कौन सी movies अच्छी लगती है, client को कौन से songs अच्छे लगते हैं, कौन से celebrities अच्छे लगते हैं, what they like to travel international, they like to travel domestic. उनको पूरा, once you start to understand your client, you start to create your ideas in taking keeping those into references. So that is how my process is. I first understand client, उसके बाद में I show my research कि मेरे ideas में से आपको कुछ पसंद आ रहा है, we combine all of them and we create a new idea. Oh, okay. Thank you, sir. So, sir, what is the importance of communication for event management students? Like, we have a different subject for communication. So, is it important in event management? Yes. See, if you ask me one thing that you want to learn to become a good event manager, I will say you it's communication. Any, so take my any videos or anything. I'm not just saying because I am here right now. Communication is a Hmm. skill which have got me so many clients. Communication, if you are good at communication, you'll automatically be confident. If you are confident, you have a different way of communicating with your client, whether it's negotiation. Client बोल रहा है कि अरे मेरे को तो 10 client मेरे यहाँ से और मिलेंगे. You, if you are good at communication, you will say तभी का तभी client को, अरे मैं कोई भी event करूंगा वहां से 10 client मेरे को मिल जाएंगे. So all this thing is all about confidence, कि आपके अंदर कितना confidence है. It will help you in negotiation, sales, closing, vendors को convince करने में, so many different areas. Communication is one skill which is so important that you have to focus. Communication से मतलब English नहीं है मेरा. Communication can be is the way of giving your ideas to your client, because Presenting. in our industry we need to present a lot of ideas. So if you have an idea and you are not able to communicate that idea to your client exactly what you are thinking, आपने सोचा है कि एक रात के थीम में नियॉन कलर का पूरा आपका बैकड्रॉप बनाओगे, और क्लाइंट को नियॉन कलर और वो सब तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है. इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द आइडिया प्रॉपर्ली, सो वो क्लाइंट को आइडिया पसंद नहीं आएगा, एंड इवेंचुअली उसको समझ, इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Thank you so much, sir. I think this is the why we have this communication subject in our NIEM. Our faculty system has given this communication subject. So, sir, reading the client's mind is the way to crack events meeting. Like, we need to actually read the client's mind, what they want and what not. Yes, actually, but reading the mind is like, understanding your client is very important. So there might be different ways of doing. The way I do it is, we have a presentation which has everything. So first meeting is all about understanding the client. So the way I said, कि how can you come up with creative ideas, is about understanding what your client likes. So first meeting we have a big Mhm. presentation, 100 150 slide का, जिसमें it is not about one idea कि ये idea को हम ये theme को कैसे करेंगे. It is about all the things in the market कि ये ऐसा concept है, this is there, this is celebrity वाला part, ये सस्ते anchors है या ये है वो. So we show everything. We show them the glimpse of what is running in the market. उसके अंदर से client कोई slide पे react करेगा, oh wow this is amazing. So उसको फिर हम लोग और
elaborate करते हैं, okay, this is one slide वो client को अच्छा लगा, so this can be his taste. So there might be a slide which is on technology, hologram or projection mapping or stereo 3D, right? Client might be, wow, this is such a unique thing. Now I got to know कि client को है ना technology वाला vibe अच्छा लगता है. In the next meeting I'll put more of the technology वाला part in this. So client might react on some celebrity, so I get to know कि client को Bollywood celebrities में ज्यादा interest है, glamour में ज्यादा interest है. Client might react on a game slide, so I get to know client likes fun part या वैसा quirky vibe है, उसका witty vibe है. So that is all about reading client. That Okay. So you actually read the minds of the clients, and it's really impressive that how you actually catch one thing and create the event for them. yeah. It's really good, sir. So what are the things budding event managers can do in lockdown? Like, what are the things we can do to actually build our event in this lockdown? So you can learn some. So first you can identify which are some skills that you are good at. So you might naturally be good at communications, so you might learn that. Next is you might learn कि what do you want. You want to start your own company, so you might think a company start करने के लिए सिर्फ clients लगते हैं. So वो तो clients तो लगते हैं, but clients के लिए you need to learn marketing. Marketing के लिए you need to learn many other stuff. So marketing आने के बाद you need to learn how do you Yes, sir. communicate with your client. So you just identify कि what do you exactly want to do after this lockdown. If you might want to do a job, you might improve your communications and learn many things about interviews and anything. If you want to get into client servicing, you can learn some additional skills which will help you grow in client servicing. It can be designing or anything. So just understand what you want to do. उससे related what are the things that you can learn right now. It can be designing, communications, it can be marketing. You might read some books, you might get some courses or anything. So yeah. Okay. So I would ask my viewers to ask questions to Sir in the DM us in Instagram. So before that, Sir, scope of virtual event after COVID in India. Like, is there a scope for virtual events in India? Yes, yes. So if in lockdown something which has boomed, and what happened after virtual events is it has made life of corporate so easy, right? See, what was the motive of the corporate events and so many events? So now there are companies who were doing conferences, booking those 5 stars and everything, but they now realize कि वो same virtual events से achieve हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा. So Yes, now they are yes. like इतना cost बच रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है. Some companies might continue बैक. आई एम नॉट सेइंग कि वर्चुअल इवेंट्स से ये बंद हो जाएगा, नहीं, दोनों का मोटिव अलग है. इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग इन फिजिकल इवेंट्स एंड एवरीथिंग. वर्चुअल इवेंट इज ऑल अबाउट कॉस्ट सेविंग, कन्वीनियंस. नाउ इन अ डे आई कैन अटेंड 5 exhibitions virtually, but in physical I cannot attend more than one or two, right? So virtual events I Yes, sir. take is a alternative to offline event, but now they are about to stay for life, I feel, and virtual events are going to grow. It might be gaming. So in last interview also there was Vikram Chaudhary who has a YouTube channel VDVC. They come uh, they do stream games, and उनके लिए वो लोग ने एक platform बनाया, the virtual event. So they want to become, so their goal is to become best India's virtual company, virtual event management company. So their focus is there. So virtual events are going to stay and going to increase. So we can grow through virtual events. That means, like, if we have 100%. started doing virtual events, we can grow through it. Okay. 100%. Thank you, sir. So what are the important things that an event manager should have? Like, what are the aspects or like education we should pursue? Like what, like we are doing this diploma, PGD, and whatever we are doing in event manager. So what are the special skills we should do? Like after So see, communication, like communication is yeah. important. So diploma and everything is right. So, but in real life, right, there might be different challenges. So just be ready to learn. So if you got to know something about, okay, this event planner is doing something with SketchUp Pro, or might be good with Photoshop or anything, right, or Discord or anything. So if you are just so the one thing which I will say after communication is curiosity. So have curiosity about everything, like why is something like this, why is something not like this. So curiosity is the way.
and that is Okay. very important. It can be anything. You might get to know about some decor wala part. So try to get deep into this. Try to get deep into production. Try to get deep into what is power, electricity. Try to get deep into lights. If you just learn more about lights, you can अगर आपका अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, there was an event जहाँ पे क्लाइंट का बजट was only 1 lakh rupees, right? वो इवेंट में if you put decor से कुछ नहीं हो सकता था. So we didn't put so much of decor. We just played with lights and we made the venue look so beautiful. So if you understand whatever things that you are doing very deeply, it might be light, sound, or anything, you can make a great impact on events. So understanding things Oh, deeply, whatever you know. okay. So, sir, this is one question that our viewers are asking. They are going on asking, how much money is required to start own company? Like all are trying to start their own company. So, how much wealth we require? So how much money is required? I don't know, but I started with zero money. So I didn't put till now. मैंने एक रुपया भी इन्वेस्ट घर से लेके नहीं किया है. सो वेदर इट्स माय फर्स्ट इवेंट में मैंने कार्ड्स जो क्लाइंट से मुझे टोकन मिला था वहां से मैंने कार्ड्स प्रिंट किए थे. उसके पास और थोड़े पैसे जो बचे थे उससे मैंने कंपनी रजिस्टर की थी. वहां से आई गॉट माय नेक्स्ट इवेंट. वहां से जो पैसे आए थे वो मैंने मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए थे. So the thing is, money management is also very important. You'll get big monies, but एक बार में वो बड़ी money आ जाती है. You try to spend, but don't do this mistake. Keep that money. Try to invest in your company. Marketing हो गया, वो खुद के skills पे हो गया. उसके बाद में we started making money. Next year company को grow करना था. I started investing on myself. Business seminars attend किए, business courses किए, marketing में invest किया, and many more stuff. So whatever money I earned from my business, and that is how my nature is. I will never put money before I earn something out of it. Now, even if my YouTube channel, I started very basic. I could have got good equipments and I could have started, but I shot it from my phone. उसके बाद से YouTube मेरा monetize हुआ. I started selling my courses and everything. वहां से जो भी पैसा आ रहा है, I'm not using a single rupee from YouTube outside. जो भी है वो उसी के ऊपर वापस जाएगा. So that is my nature of uh, putting whatever you are earning, put it back, and it will grow eventually. Wow, so this is so impressive that you started from zero and now you're earning so much and you're doing so good in this thing. I think all our viewers are going motivated and they are going to open their own event company with zero money Yeah. because you have So literally zero money. motivated us. So the thing with zero money is ना बहुत सारे लोग बोलते हैं zero money से कैसे होगा क्या होगा. So it is, and उसमें That's है ना बहुत there will be a lot of fancy things, right? आपको लगेगा कि offices बहुत सारे event planners की अच्छी है, या they have a fancy laptop, Apple का laptop है, या ये है वो है. So you will feel कि ये सब बहुत necessity है, but it is not compulsory that you have everything starting में. The thing is, उन लोगों को आप देखो 20 साल 25 साल. So when I started my company, second project में I had a competition with a company जो 25 साल का experience है उनको wedding company में. एंड नीचे जब हम लोग बिल्डिंग में क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे, आई वाज लाइक ये प्रोजेक्ट तो नहीं आने वाला यार, यहाँ पे 25 साल पुरानी कंपनी है. बट देन एट द नेक्स्ट मोमेंट आई टोल्ड माय क्लाइंट ये प्रोजेक्ट अब हम ही लेंगे, इसको बीट करेंगे. सो दैट कॉन्फिडेंस, एंड वी गॉट द प्रोजेक्ट. उसके बाद में तो हमने बहुत सारे कंपनीज को बीट किया था. एंड विद द लैपटॉप, माय लैपटॉप वाज लाइक कभी कभी वो बीच में बंद हो जाता था because I did not put money. जो था मैंने उसी चीज से काम चलाया. So it's not about the fancy thing you have. It's about how you manage to अभी आप अपना काम कैसे चला सकते हो जो आपके पास वो चीज है. You might not have a laptop. It's fine. You just take a printout of whatever your ideas are. You might not have a good phone to record a video. So it's fine. आप उसको दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लो और eventually वहां से कमा के आप you will make something out of it. Anything is possible. You just have a mind. You okay. just need to have a mindset कि ऐसा करना है मुझे. So we will come out. So mindset is important. You don't have need to have a fancy item with you, right? So Yes, 100%. okay. So does starting the event company require license? Like, do we need license for an event company to start? Yeah, so we need we need to follow some compliances. So basically license में देखो the import, so there are some license. एक आपकी company registered करना होता है, right? So now that is also not very important.
Now, why do we register Hmm. so you can do an LLP, right? Limited liability partnership and GST number. These are the two things which are very necessary to start a company because आपके vendors को आपको GST billing and everything देना होता है. Next thing you might have heard कि company को जो नाम लिया उसको trademark कराना है, लोगों क्या उसको trademark कराना है, but that is not the most important thing. उसके अंदर अभी आपके पास अगर पैसे नहीं है 15,000 रुपीज या 20,000 रुपीज डालने के लिए, you can start without it. First दो event कर लो, उसके बाद you register your name. The importance of doing a trademark and logo trademark is that आपका नाम कोई और ले नहीं सकता. सो वो आपको अगर वही करना है तो पहले दो इवेंट्स Okay. कोई और नाम से कर लो, आपका ओरिजिनल नाम ही यूज मत करो. सो एवरीथिंग हैज अ वे आउट. तो मतलब हम लोग अपना लाइसेंस, हम लोग को इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में लाइसेंस, कहीं ना कहीं वी नीड लाइसेंस, राइट सर? Yes, yes, 100%. See, on event, working on an event is a different thing, right? वहां पे तो आपके client से आपको already you are charging them money, right? So उसमें on event पे तो there are many licenses. There are food license, fire license. There are so if you see Yes sir. PPL, IPRS, Novex, there are so many licenses that you need. But that is a different thing. So I am talking about Hmm. starting your own business और उसके लिए आपको what certificate? So MSME certificate, GST, and your company partnership or your solopreneur thing. You need these three things, bas. Okay, so sir, thank you so much. You have answered all our questions. It was so good to talk to you. So at last, sir, I would like to introduce you all to our team that is Tap into Talent. So first I'll tell you something about us. At last, I'd like to tell you about our upcoming event, Tap into Talent by the Event Junction. Tap into Talent is the event for dancers, singers, beatboxers, drawing, art, and games. This is the virtual event. The participants will get 3 days of free workshop. On winning, winners will get cash prize, certificate, and trophies. And registration is starting from tomorrow evening. So now I'd like to call upon all our team members. So first, Nitish, D. Nitish Kumar. Yes, Yogita. Hi, Nitish. Hello. So How are Nitish, you, what do you Nitish? think? सो जैसे कि नर्वस फील कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग अपना एक तो टैप इनटू टैलेंट कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग का टीम मिल के, हम लोग का जितना भी 5 जन के 5 मेंबर्स ऑफ टीम. सो उसको लेके अभी बहुत 2-3 महीने से हम लोग सोच के आए छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, ताकि लाइक कैसे लाइक वर्चुअली कैसे हम लोग कर पाएंगे, फिजिकली लाइक मिलना जुलना होके लाइक मीटिंग्स एंड ऑल फिक्स करके हो जाता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज एंड ऑल, किसका कैसा टाइमिंग है, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना पड़ता है. सो बहुत सारा इश्यूज एंड ऑल होते रहते हैं. फिर भी लाइक हम लोग का टीम जो है लाइक वी गुड हार्ड वर्क फॉर दिस. सो मैं You कहूँगा guys कि are doing a fab work. You guys are doing a fab work. So ये जो nervousness है ना, ये होती है. यस यस. And जो प्रॉब्लम मतलब इसके पीछे ना, I'll tell you a story about मेरा जो मेरा भी आदत है कि so this story will help you कि क्या हुआ था. आई वॉज अ स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद में ना जब अपनी खुद की कंपनी मैंने स्टार्ट की थी, सो आई प्लान कि मैं कुछ एक अलग इवेंट करता हूँ. वेडिंग प्लानर्स क्लब मैंने स्टार्ट किया था और मेरे पास है ना उसके अंदर ऑडियंस नहीं थी. अब मैंने एक जगह तो बुक कर दी. मैंने क्या किया, मैंने सारे छोटे छोटे वेडिंग प्लानर्स को बोला कि यहाँ पे अमेजिंग बड़े बड़े कंपनी के स्पीकर्स आने वाले. तो मैंने क्राउड इकट्ठा कर लिया, उनको देख के आ गए. स्पीकर्स थे नहीं मेरे पास. वो स्पीकर्स को मैंने बोला कि इतना क्राउड आ रहा है, आप भी यहाँ पे आ जाओ, आपको एक्सपोजर मिलेगा. और वो स्पीकर्स को मैंने बोला एक बड़े गेस्ट आने वाले जो कि बहुत बड़े कीनोट स्पीकर है. उन स्पीकर को मैंने बोला कि मेरे पास इतने ऑडियंस और इतनी अमेजिंग कंपनीज है जहां पे आप कीनोट स्पीच दे सकते हो. सो वो भी आ गए. एंड उसके बाद में क्या हुआ, उस दिन पे ऑडियंस टर्न अप नहीं हुई. राइट. सो वो स्पीकर आ गए, बड़े प्लानर्स आ गए, सब कुछ आ गया. बट द थिंग इज वो लोग भी चाहते थे कि ये सक्सेसफुल हो. उन्होंने बोला यस ये बार हुआ तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू डू मेरे को फर्स्ट फोन करना, आई विल बी देयर. राइट. सो दैट इज द थिंग, व्हेनेवर समबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन योर इवेंट, आपका नेटवर्क जाएगा या कुछ भी होगा, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि यार इंटरनेट है, होता है या कुछ तो भी होता है, दे आर स्टार्टिंग अप और वैसा कुछ होता है. Everybody wants to support you and everybody wants you all to be successful. So that's the only thing keep in mind. जैसे कि आप लाइक अपना एक्सपीरियंस बोले, So let's तो call upon टैप इनटू, जैसे कि टैप इनटू Nitish, call टैलेंट upon लाइक. Suyash Pathak also. ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, यू. ओके.
add Shuyash and our other team members also like Kunal, Jimmy, and Nikita. I'd like if Hi. all of them will meet, so they will get to know something. Hi everyone. Hi Nikita. Hi Suyash. Good to meet you all. Such young and enthusiastic team. So so there is no Jimmy को थोड़ा सा बुला लो. Jimmy has some issues and Kunal too. Kunal has some Call family Jimmy and issues. Kunal also. So there is a Uh, Jimmy and Kunal. So, Okay. so Shuyas, क्या लगता yes. है हम लोग का सक्सेस होगा? बिल्कुल सक्सेस होगा, सक्सेस होना चाहिए। हम लोगों ने Yes. टैलेंट टू टैलेंट को लेके हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब इट्स ऑल अपॉन द व्यूअर्स। And Nikita, you say. Yeah, we will definitely be successful. We are working so hard for it. And Yash, it was very nice meeting and Yeah. talking to you. The Yes. session was Thank you very so much. interesting. Thank you so सर का much. बात सुन के भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला टू वर्क हार्ड एंड Exactly. Yes. Yes. And Yes. we're Correct. starting Correct. up, and it's nice to hear someone who started from scratch and it's now so successful. Yeah. Thank you so much, guys. Nice speaking to such a Yes. young and And enthusiastic I team. think we young hands, this young hand has started this and we made this successful. Like all, we are so young and we are starting this. So I hope we all get success. Yeah, 100% exactly. you all going to become successful event planners. No doubt about it. Yes. So जैसे कि like मेरा एक तो experience हम अपना share Thank you, करना sir. चाहते हैं. So can I continue, Yogita? Yeah. So I like Yes, tap yes, into talent. Nitish. Yeah, Uh, Nitish, you can continue. so like tap into talent का like बहुत like हम लोग इन जनवरी से ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि लाइक स्टेप एंड स्टाइल करके हम लोग का नाम था पहले, लाइक फिजिकली हम लोग करेंगे. ड्यू टू सम कंडीशन लाइक हम लोग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था, लाइक नॉलेज उतना नहीं था. सो आफ्टर सम डेज कि हम लोग सोचे थे लाइक करेंगे करके वर्चुअली करते, छोटा सा इवेंट करते ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. लाइक हम लाइक आई एम अ लाइक आर्टिस्ट लाइक डांसर, सो हम सोचे थे कि जो चीज में मेरा एक्सपीरियंसड है, लाइक डांसिंग में मेरा लाइक ऑब्जर्वेशन है, लाइक हम लोग को एनआईएम में बोला जाता है कि पहले ऑब्जर्वेशन को अच्छे से करो, देन वी फिर वहां से तुम लोग लाइक ऑब्जर्वेशन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए. सो हम लोग ऑब्जर्वेशन मेरा जो भी था डांस को लेके, सो फिजिकली जैसे कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स, बैटल, साइफर्स जितना भी होता है, तो टैलेंट हंट के लिए जितना भी है सो उतना मैंने यहाँ पर इस बार यूज किया ताकि पब्लिक शो में, ताकि लाइक फर्स्ट टाइम हम लोग छोटा सा करके ताकि टीम को हम लोग जितना हो सके बढ़ा सके. जैसे स्टैंड अप कॉमेडी भी लाइक हम लोग सोच रहे थे, बट स्टैंड अप कॉमेडी लाइक फिजिकली हम लोग करना चाहते हैं, बट नॉट आफ्टर लॉकडाउन विल after lockdown we can do, but now it's not possible for virtual. Like video upload कर दो, then people can see, but live में थोड़ा सा like रहना थोड़ा सा it's difficult to that. And so वही से हम लोग अभी इतना तक आए हैं अभी, ताकि जितना भी एक्सपीरियंस, निकिता पोस्टर्स एंड ऑल बहुत अच्छे से बनाती है, श्रेयस का लाइक मतलब लाइक सबका मेहनत जुड़ के इतना तक आया, ताकि लाइक और भी हम लोग का द टैप इनटू टैलेंट जो अभी बन रहा है. सो ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है हम लोग का. पहले डांसिंग है, फिर सिंगिंग है, देन बीट बॉक्सिंग है, देन ड्राइंग है, फिर गेमिंग भी है, पबजी, फ्री फायर जो रहेगा. Oh, सो पूरा लाइक वीकेंड में होगा, तो पूरा 1 मंथ से लेके थोड़ा सा ज्यादा लाइक है पूरा इवेंट. सो छोटा से ही हम लोग कर रहे, सो इतना बिग. सो लाइक हम लाइक चाहते कि यही टीम लाइक रहे पूरा, ताकि ये बॉन्ड जो लाइक एक उंगली से ताली नहीं बजता, लाइक 5 उंगली से ताली बजता है. true, very true. यस. And आप बेसिकली लोगों की टीम बहुत अच्छी है. समर कैंप टाइप का फोकस हो रहा है. Okay. Like the participants will get 3 days workshop on the skills and arts, and then there will be competition to win cash prizes and all. So basically we're planning to focus the event like it looks like a summer camp.
We have different judges from different categories. Uh, so we are working hard in that field. Great, great, great. And it sounds like a good idea. Sounds like a good idea. It sounds like a good event, and hopefully you guys do a great job and keep coming up with new editions of this particular event, and this event grow by folds and coming years. Yeah. Thank you for blessing us. Really, thank you for joining us. It was really amazing. Thank you so much. Thank Thank you you so much. so much for your valuable presence with us. Thank you so much. It was great time with you guys, and yes, see you guys. Bye. Have a great day and happy Event Managers Day to all of you. Same to you, Thank Yash. you so much and same to you. Bye. See you. Oh, bye. Okay. Then Nikita, Shuyas, Yogita. So Yogita, you बोलो did a good job. Apart from that, the registration process for Tap into Talent is starting from tomorrow evening. Yeah, this is the banner I was showing below that screen. You can see the details over here. Check out here. Further details will be on our Instagram and Facebook handle. You guys go check it out and register soon. Peace out. Anything else, Nikita, you want to say? It was really amazing. I enjoyed the whole live session. So much of knowledge, and we got to know so much about this COVID situation. Like everyone had doubts in their mind. I think it will help a lot for everyone. So I believe it was nice. It's a nice start. Start. Okay, yes. So this is our first day and first show of our the event junction team. So I feel like very excited that मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. yes I am continue. So आज का दिन ही अच्छा लगा. So योगिता तुम बहुत अच्छा काम किया. तुम्हारा एंकरिंग वाज वेरी गुड. सो तुम कुछ बोलना चाहते हो हम लोग का कंपनी के बारे में? क्या है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. या तुम्हारा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है. शुयश, हेलो. शुयश. Yeah. सो एक बार हम लोग टीजर प्ले कर देते हैं. Yeah, sure. Then we can end up this session. Okay? Yeah, definitely. Yeah, sure. Put your hands up.